the end, we investigated the in vitro cell culture study. Next, please. So this is the graphical. So this is the graphical abstract of my. So we can see that creatine is a waste material of different product, just like a product, just like a creatine feather waste. we have layer and We have hair, and in this project where we have extracted the creatine from our hair, human hair, and in addition to that, wool, lamb, wool waste, and animal or creatine are present. extracted And this extracted keratin when extracted keratin were extracted using the solution method, urea method. And after the extraction of keratin and purification, we have fabricated the nanofiber by using the electrospinning technique. And after that, we categorize this sample, and then we have tested the in vitro cell culture study where this nanofiber is toxic or non-toxic to the cell. So this is a simple introduction. So this is we have introduction. So in our work, we have basically nanofiber fabricate the nanofiber by using the electrospin technique, and we added some biochemical cues and some signals, some growth factor to this nanofiber to make a bioactive material. So biomaterial basically we are using some polysaccharides and proteins. In this study, we are using keratin. In addition to that, we are also using gelatin, alginate, collagen, some synthetic polymers. So why are we using So why are we using keratin? Keratin is a first of its very abundant material in the nature, and it has a protein in nature, and it has some amino acid which is very essential for growth of cells. So in this study, we have extracted the we have extracted the keratin, and this is the another reason why we using keratin. Keratin has some arginine, glycine, and leucine amino acid that is useful for the growth of the cell. In addition to that, in India alone, there is a waste market is a approx 2 billion US 2 billion US market is there for US and India. 350 million tons annually exported from the India. That's why we are using keratin technique to utilize this type of waste. So this is the how we extract the keratin. So initially we have extracted the keratin from hair by using the Sendai method. Sendai, and this is also called the alkali method. We have used the SDS to wash out the keratin hair. Just we selected the hair sample from the human, collected from the local saloon. After that, we have treated with the hexane to remove some lipids and then make a media mix of urea, thiourea, and mercaptoethanol to break down the keratins. And after that, we have centrifuged and extracted, purified this keratin sample by using a dialysis method. This is the photograph of how we extracted the keratin. First one is the hair, this is raw material, and second one is the solution, and the last one, the white part, is the keratin sample. And this is a electrospin technique. So we have used the 1.5% of keratin blended with the PVA, from 10%. The ratio was 1:1, and then mixed for the 2 hours. Then electrospinning. The condition was the electrospinning was flow rate 5 microtop per minute. Voltage was 16 kilovolt. Distance from 12 centimeter, and the series that we have used for electrospinning was 20 meters. After fabrication of our nanofiber, we categorize this sample by using SAM, FTR, and XRD, and some physical property was also performed. In the end, we have tested the in vitro cytosis and cell growth study by using the embryonic stem cell. So these are the result. So these are the result. First one you can see that first one is the keratin nanofiber mad scaffold that we have fabricated, and the second one is the microscopic image, and the below one, this is the same image of this nanofiber, and you can see this is the nanofiber, and the diameter was approximately 100 to 250 nanometer. That's why we have called this is nanofiber. These are physical properties. These are physical properties. Water solubility was 15%, swelling is 332%, 100%, and contact angle was 36.5%. That's showing that is some hydrophobic in nature. And Degradation study was also performed. degradation study was also performed. After 14 days, the degradation percentage that we have left the sample was 62%. Contact angle. This is the image of contact angle. And this is the FTR spectrum. And this is the FTR spectrum of keratin nanofiber that so that there's a hydrogen bonding and some hydrophobic interaction between the EV and keratin.
This is the XRD graph that This is the XRD graph that shows there's the peak around 90.6 degrees. So the keratin structure beta plateau structure of keratin. this is the cytology. This is the cytology study that shows that there is no toxicity of keratin nanofiber as compared to control. Both are the same data. You can Both the same data. This is a You can see that. circle show that This yellow circle shows that the nano cell embryonic stem cells grow on the top of the nanofiber. this is the Cell addition, infiltration, and growth study. The TAPI study and some immunocytokine study was performed and showing that our nanofiber scaffold support the cell growth. This is the immunocytochemical. This is the immunocytochemical presentation. Alpha You can see that alpha tubulin and DAPI we maintain by this of some cell and formation of some cell and division of cells. That's why we can say that our scaffold is supporting the cell growth. So this is the conclusion in our present when we have successfully fabricated the keratin nanofiber, and we also conclude that this fiber is cytocompatible, and we can further this fiber can be useful for the some tissue engineering, especially for the skin tissue engineering and other applications. This is the liquid that we have purchased last year by using by the SUL ANRF fund electrospinning experiment instrument, and this is some other scaffold that we have made in our lab. This is the scaffold. This is the scaffold. You can see the same image. You can see the same image. This is the scaffold. This is the scaffold. We have fabricated different type of shape of scaffold like tubular scaffold and other shape. These are some conductive. These are some conductive nanofiber. We have also fabricated the conductive nanofiber for the especially for cardiac tissue engineering and neural tissue engineering. The black one is The black one is the hydrogel that's contain the polyphenol that is conductive in nature. So this is a publication. So this is a publication that we published. In the last. In the last year, I will give thanks to my funding agency Anushandhan, National Research Foundation, formerly known as NCRB in New Delhi, for providing the fund for this project. In addition to that, microorbiter, Dr. Pratima Gupta, Chandrasekhar Sharma sir, and Nivita Lenka madam for supporting me for the experiment. And at the last, HOD Dr. Rita Meshwar, I'm so thankful to. Thank you. Thank you. Yes, so very nice work and very fruitful work. You have checked also the durability of the tension of this fiber. This is actually this to work is. क्या आप उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी चेक करते हैं क्योंकि वहाँ ज्यादा बोल रहे हैं कि इंक्रीज वगैरह में तो वहाँ पर अगर टेंशन हुआ तो टूटने का डर तो नहीं लगेगा बेसिकली उसको चेक करते हैं और अभी हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है नहीं मेडिकल टेस्टिंग। तो लास्ट टाइम हमने लाया था एनआईटी से एंड जेजीयू से, तो उसमें एक्चुअली सेल कल्चर के लिए उतना टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अगर दूसरे एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं पैकेजिंग के लिए या कुछ और एप्लीकेशन के लिए उसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत पड़ती है। अब ये सेल कल्चर के लिए जो बना है वो सफिशिएंट है। Any other question? Any other question? Thank you. Thank you. Thank you, Keshav sir. Thank you, Keshav sir. Now for the Now for the next presentation, I invite I invite Meenakshi Devangan. The topic of her presentation is the Shivnath River, a critical analysis of environmental. Okay. Sorry, the Okay. topic has Sorry, the topic has changed. The topic of her presentation is a brief review on fish diversity. After this presentation, We will have a presentation by Ritu Desh Lahire. I hope she is ready. No, it is Meenakshi Devangan. it is Meenakshi Devangan. Good afternoon. Good afternoon. Morning, everyone. Morning, everyone. My name is Meenakshi Devangan, Presentation topic and my presentation topic is a brief review on a fish diversity.
there are my content. So there are my content. Next. Next. So there are my content. So there are my content. Abstract. As we know, variety of the जो कि species, वर्ड में जो कि वर्ल्ड में पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ द एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिश जो कि इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, एंड इनका एक स्पेसिफिक बेनिफिट होता है। फिश जिसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि फॉर मेंटेनिंग, improving cognitive and lowering the body of the immune, high protein की body के टिश्यू पे ऑर्गेनिज्म के repair and growth के लिए important होते हैं। Introduction. One excellent source Introduction. of One excellent source of the protein, fish, source of the essential part of the fish, and fish is the essential of the balance because providing a numerous health benefit. providing a numerous health benefit, and the fish has been a healthy dietary source for humans because of इनमें minerals, proteins, vitamins होते हैं जो कि health important होते हैं, and ये क्या करते हैं for maintaining the heart health and improving cognitive and the body levels of the inflammation. ये inflammation को lower करने का काम करते हैं। Around 1998 में फर्स्टली उन्होंने फ्रेश वाटर फिश कल्टीवेशन के ऊपर काम किया था, एंड ही सेड as a highly profitable venture due to its low input cost, क्योंकि इनमें कॉस्ट बहुत ही लो लगता है। So there are by review of literature recently 2024 from the census के तहत जिन्होंने राजनापुर डिस्ट्रिक्ट की फिश डाइवर्सिटी के बारे में, फिश आइडेंटिफिकेशन एंड इनकी डाइवर्सिटी के बारे में बताया था। राजनापुर डिस्ट्रिक्ट में वैरायटी ऑफ द फिश जो कि पॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि साइक्लिनिफॉर्म एंड द फैमिली साइक्लिडिया जो कि राजनापुर डिस्ट्रिक्ट के पॉन्ड्स में डोमिनेंट फॉर्म में है, एंड फिशेस जैसे कि कतला कतला, वालिरा एक्टू, लोबियोरोइटा, क्लैरियस बैक्टर, चना पैंटियस, ये सब स्पीसीज इन पॉन्ड्स में कॉमनली देखने को मिलते हैं। एंड देयर आर सो मैनी रिसर्चर्स जिन्होंने इस फिश डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिफिकेशन पर वर्क किया है। So if we have a fish show, how do we identify the fish? So there are many formulas जो कि fish के identification में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बॉडी शेप एंड द मेजरमेंट। हम फिश की बॉडी शेप, उसके वेट एंड उनके साइज के बेस पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड, स्केल्स एंड द स्किन। स्केल्स जो कि फिश की बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि साइक्लॉइड स्केल्स, उनके स्ट्रक्चर एंड उनके बेस पर भी हम फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिन एंड फिन रेज। फिन एंड फिन रेज के बेस पर हम फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो फिश स्पीसीज होती है उनका एक पर्टिकुलर फिन फॉर्मूला होता है जिसके बेस पर हम फिश को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। माउथ एंड जॉय स्ट्रक्चर, माउथ एंड उनके जॉय स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आईज एंड द नॉस्ट्रिल, उनके साइज एंड शेप के बेसिस पर हम फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। But the most important tool for fish identification is fish formula. Component of the fin formula, जैसे कि fishes में dorsal fin, pectoral fin, anal fin, caudal fin and the variety of the fins देखने को मिलते हैं। तो dorsal fin के लिए dorsal fin को मेनली हम कैपिटल डी, उसकी स्पाइन्स को हम कैपिटल डी और उनके जो रेज होते हैं उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। एनल फिन्स के लिए एनल फिन्स के जो स्पाइन्स होते हैं उसको कैपिटल ए और जो उनके रेज होते हैं उनको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। पेक्टोरल फिन्स को हम पी से कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। पेल्विक फिन जिनको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं एंड द कॉर्डल फिन जिनको हम सी से डिनोट करते हैं। फिन फॉर्मूला का ये फॉर्मेट होता है कैपिटल डी स्लैश स्मॉल डी जो कि डॉर्सल फिन को बताता है, कैपिटल ए स्लैश स्मॉल ए जो कि एनल फिन को बताता है, कैपिटल पी जो कि पेक्टोरल फिन को बताता है, कैपिटल बी जो कि पैल्विक फिन को बताता है एंड सी जो कि कॉर्डल फिन को बताता है। तो देयर आर सम एग्जांपल, जैसे कि फिश की एक फैमिली है साल्मोनिडिया जिसमें साल्मन और ट्रॉट्स आते हैं। तो उनका जो डॉर्सल फिन होता है वो 10 to 12 सॉफ्ट रेज होते हैं उनमें। एनल फिन
8 to 10, pectoral fins 15 to 70 range, pelvic fin 8 to 10 range, caudal fin 90 to 21 range. इसका फीस फॉर्मूला होता है डी डॉर्सल फिन 10 to 12, एनल फिन 8 to 10, pectoral fin 15 to 70 और pelvic fin 8 to 10 एंड वो caudal fin 90 to 21 होता है. इसी प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फीस स्पीसीज का एक स्पेसिफिक फीस फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर हम फीस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. There are some other examples. So, fish species जो कि कुछ कॉमन फिश स्पीसीज एंड उनके फॉर्मूला इस प्रकार से है जैसे कि कतला का जो फीड फॉर्मूला होता है उसमें डॉर्सल फिन 17 to 19 देखने को मिलते हैं, एनल फिन 7 to 9, पेक्टोरल फिन 70 to 90 एंड इसमें पेल्विक फिन 9 to 10 देखने को मिलता है और इसमें कॉर्डल फिन अपसेंट रहता है. जैसे लेबियोरोइटा का भी एक स्पेसिफिक फिन फॉर्मूला है जैसे कि डॉर्सल फिन 12 to 14, एनल फिन 8 to 10, पेक्टोरल फिन 16 to 18 एंड pelvic fin 8 to 9 होता है. इसी प्रकार से डिफरेंट स्पीसीज जिनके अलग अलग फिन फॉर्मूलाज होते हैं. सो एप्लीकेशन ऑफ फिन फॉर्मूला जैसे कि ह्यूमंस का एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट्स होता है वैसे ही फिशेस में अलग अलग सबका एक स्पेसिफिक फिन फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर हम फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई अननोन स्पीसीज है फिश की तो नोन स्पीसीज की तो उसको हम उससे कंपेयर करके हम फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मैम प्लीज कंक्लूड. फिर रोल ऑफ द फिश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फूड सिक्योरिटी बिलियंस ऑफ पीपल के लिए एक यह फूड की तरह काम करता है एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जो कि एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम पीपल के लिए एक इनकम का अच्छा सोर्स हो रहा है. Conclusion, fish diversity. The study of the fish diversity reveals कि फिशेस की बहुत सारी स्पीसीज को देखने को मिलती है और मेरे जिस एरिया पे वहां तक अभी तक कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पे, तो आई वांट कि वहाँ पे मैं काम करना चाहती हूँ कि वहाँ पे एक डैम है सरोदा डैम जहाँ पे कौन कौन से फिश पाए जा रहे हैं एंड उनको उनका आइडेंटिफिकेशन करके मैं अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती हूँ. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Questions? Any questions? Hello. इसमें एंटायर जितने भी आपने फिर फार्मर लिया है उसमें आपने एनटीआर मेंशन नहीं किया है. क्यों? सिस्टम कतला की बात देखो वहाँ पर एनटीआर है ही नहीं. अगर आप ऑथेंटिक बताता हूँ. आप तुम बताओ क्या है, क्यों नहीं किया एलटीआर? लेटर की बात कर रहे हो आप ना? हाँ, क्यों नहीं? लेटर लाइन तो वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्यों नहीं किया? इन्होंने इसलिए नहीं किया है, ब्रीफ सुननी थी. ये जो इन्होंने ब्रीफ रिव्यू किया है डाइवर्सिटी के लिए किया है और ये ओनली सुपरफिशियल आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉर्मूला है. जब हम डेप्थ में जाते हैं तो कई ऐसी वैरायटीज मिलती है जिनके फल बिल्कुल सिमिलर है, देन वी इंटर द सिर्फ लेटरल लाइन नहीं होता. एक मिनट पूछे हो तो सुनो इधर. अगर जब डेप्थ में जाते हैं तो सिर्फ लेटरल लाइन नहीं होता है, आई की बीट होती है, माउथ की बीट होती है, बहुत सारी चीजें होती है, करीब करीब 15 पैरामीटर्स में होते हैं. तो इन्होंने जो लिया है अभी ये सब सुपरफिशियल लिया हुआ. किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए और डाइवर्सिटी के लिए. ठीक है. तो ठीक है मैडम. मैं फोन निकाल रहा हूँ. Thank you, Meenakshi. Thank you. I will continue with the oral presentations after a while because our resource person for today, Dr. Prashant Thavle has arrived. I welcome you, sir. I also welcome our another resource person, Dr. Ashish Johnson, who has presented a very beautiful lecture on beekeeping yesterday. That was a wonderful lecture, sir.
So I request you both to take a seat on the stage, please. Sir, I request आइए you. I request you both. गुरप्रीत भाटे सर I request Dr. I Anita request Maheshwar Dr. ma'am Anita Maheshwar ma'am to please take a to seat. please take a seat on the stage, ma'am. I request Chiranjeev Pandey I sir request and Chiranjeev Gurpreet Pandey Bhatia sir sir and Gurpreet Bhatia sir to to take a seat. please take a seat on the stage. First, I request First, I the head of the request department of the head of the Dr. Department of Anita Maheshwar Botany, ma'am Dr. to Anita please welcome Maheshwar our ma'am, today's to resource please person, welcome Dr. our Prashant today's Thavle resource sir, with person, a bouquet. Dr. Prashant Thavle sir, with a bouquet. Now, for the welcome of Now, for the welcome of Dr. Ashish Jha Dr. sir, Ashish Jha sir, I Dr. invite Sanjay Desai sir Dr. to Sanjay please Desai present sir him with to a floral please bouquet. present him with a floral bouquet. Now, for presenting a Now, brief presenting introduction a of brief our today's introduction resource of person, our today's resource person, Thavle, I Dr. invite Tavle. Shyamvari I from invite MSc Shyamvari Final, from Department of MSc Zoology, Final, Department to of present Zoology, it. to present it. Good morning, everyone, and Good morning, welcome you all everyone, in the last and day of welcome you the all 3 days in the last day International of Sun the Milan. three I days am International Shyamvari, a Seminar. student of I am MSc Shamali, Final, a student of Department of MSc Final Zoology. Year, Department of Zoology. The biodata of Dr. The Prashant biodata R. of Dr. Thavle sir, Prashant a R. renowned Thavle sir, expert in a renowned expert environmental in science and environmental technology. science and Dr. technology. Thavle is a Dr. PhD Thavle holder is in a PhD agriculture holder in chemistry and soil agriculture science, chemistry research as fellow and junior technical research officer, fellow and National technical Environmental officer at Engineering National Research Environmental Institute at Engineering NIRI, Research Nagpur. Institute at His NIRI, expertise lies Nagpur. in His environmental expertise biotechnology lies and in land environmental reclamation. biotechnology He is a and senior land technical officer, reclamation. He is a NIRI, senior Nagpur. He technical has a officer specialized NIRI, research Nagpur. area He on has a land treatment, specialized research area bioremediation, on and land final treatment, stage of water. He bioremedication, has and final handled stage of more water. than He 10 has projects handled more than 10 like projects water like for crop water integrating for crop biotreat integrating wastewater biotreat with wastewater enhanced water with use enhanced water efficiency to use support the green efficiency to economy in support the European green Union economy and in India. European He has Union and covered India. more than He 30 has covered journals and at repeated international level journals at in international level. 1983 One in Jubilee MSc commercial at model in MSc 1989. at He received the Foundation 1989. Day He Award received the in Foundation Day Award 1993, in technical support 1993. for Technical support R&D for excellence R&D during excellence of the 1992. institute during He received 1992. gold medal for He the received best gold medal poster for the best presentation on poster advanced presentation on technique advanced of extraction of technique of aromatic and extraction of essential oil aromatic and essential at oil Aerotech at exhibition Aerotech in exhibition 2005. in In 2005. conclusion, Dr. In Prashant R. conclusion, Dr. Thavle sir Prashant R. is a Thavle sir distinguished is a scientist who distinguished has made scientist who significant has made contribution to the significant field of contribution to environmental the field science of and environmental technology. science His and research and technology. His expertise research have and had a lasting expertise impact on have our had a lasting understanding of impact on our environmental, understanding of biotechnology, environmental and land biotechnology reclamation. and land Thank you. reclamation. And Thank now, you. with all my And now, respect, with I all my invite Dr. respect, I Thavle sir invite for Dr. his Thavle lecture. sir for his lecture. Thank you.
I request you all to take a seat below the stage. I'm going to present on role of biochar in sustainable agriculture and development and climate change. Role in climate change. You have to understand what is the biochar. Biochar is the byproduct of thermal decomposition of organic matter below 900 degrees centigrade under low oxygen consumption. It has a capacity to absorb all the nutrients and improve soil properties like better water retention, mixed with the soil. It has a better water retention capacity mixed with the soil and favorable structure for microorganisms. It's different from the compost in that respect. Unlike the compost, it has a long fertilizing effect like nutrient stabilizing matrix and improved soil matrix and better cation exchange capacity and favorable for microbial structure. Why do we need biochar? Because biochar is economically cost effective. It's help in carbon sequestration, thereby help in climate mitigation. Content in the soil, it increase porosity, water holding capacity, nutrient retention, and microbial activity. It formed due to pyrolysis of the organic matter in a low consumption. This is the three-dimensional view of biochar. Like I said, has a porous structure rich in functional group and which is stable, quite stable, because of the covalent bond and high stability and durability. The raw material, we can use the raw material for biochar are corn stalk, bagasse, wood chip. We can use poultry manure also and cow manure also. What is the sustainable agriculture? Sustainable agriculture means is integrate ecological health,
with economical viability, sustainability, and ensuring the food security and while preserving natural resources and promoting the community resilience against climatic changes. Means it adapt quickly with the climate change. These are the principles of sustainable farming. For sustainable farming, the soil health should be good, means complete cover crop and no tillage practices to be followed, diverse ecosystem and water and following better water management practices like agriculture is better understanding for which enhances soil fertility, nutrient, microbial activity, boosts profit, sequester carbon, reduces greenhouse gas emission. These are some uh, key features of the biochar in agriculture. This is the role of biochar in enhancing soil fertility and improving soil structure. This is the uh, uh, improvement of soil. This is the graphical video which improves soil aggregate structure, break down phosphorus and potassium and inhibit other harmful bacteria, absorb residues from residual, thereby reducing the leaching of pollutant into the groundwater. Many researchers have focused on the vital application for its water limitation. Like Role of YHR in role of vital in climate change mitigation. YHR Vital has a structure which allows long-term stabilization of carbon in the soil and reducing the emission into the environment. that climate That climate increase the biochar, also increase the biochar, uh, improve the resilience to improve the resilience to the which adapt the climate changes very climate easily. changes very easily. These are the conclusion. These are the conclusions. Sir, good evening. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Now this presentation is open for questions and discussion. If you have any questions. Okay, thank you so much, sir. Okay, thank you so much, sir, for this informative lecture. Now we will continue with our oral presentations. Okay, our next resource person will be joining online. Uh, कार्तिक सर से फोन दे रहा है ना Before inviting Before inviting Karthik sir, I invite Shreya Dubey.
सर वो प्रशांत टी से ज्वाइन किया हुआ प्रशांत कॉलेज सर के हाँ शायद उसी से ज्वाइन कर लिया हाँ, मुझे लग रहा है हेलो ज्वाइन कर लिया ना? हाँ कर लिया ना? हाँ, हेलो आई एम सॉरी वो सर का और मेरा सिस्टम एक ही है इसलिए मे बी द नेम इज शोइंग अस Our next resource person, Dr. Karthik Our sir, next resource person, Dr. Karthik sir, has joined. I welcome you, sir. And for his brief introduction, I invite Shreya Dubey from MSc, Department of Zoology. छोड़ दें Good morning, respected teachers. I am here to give brief introduction about Dr. Raghunathan sir. Dr. Karthik Raghunathan sir is a principal scientist at CSIR NEERI, National Environmental Engineering Research Institute in Nagpur. He has completed MSc in Material Resource Engineering from CSIR IMMT Bhubaneswar. Dr. Raghunathan sir has over 12 years of research experiences. He has published over paper in international journal. He has granted more than 25 R&D projects, including NEERI in-house project on recovery of water from industrial waste by capturing moisture in high-rate transpiration system. He is a member of editorial board and reviewer of journal, including Soil Science Research and Environmental Management. Dr. Raghunathan sir is a member of task force for ISO IMS IT at NEERI. Thank you. With all due respect, I would like to invite Dr. Raghunathan sir for his lecture. Thank you, madam, for your introduction. I just wanted to confirm now whether my screen is visible and the presentation is visible to all. Generally, the policy which is being given in the environment field is generally given by Ministry of Environment and Forest. And ISSDC, they also confer with NEERI before giving up any of the new policies. So in policy decision making also, NEERI has its own role. This is the overview of major departments and the functions which are present. So we have director who is the head of the institute, and we have zonal centers at 5 major cities: Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, and Mumbai. Director who is placed at NEERI Nagpur, which is the headquarters. He is presiding over 5 different vertical heads, in which environmental resource planning and management is one, sustainable environmental process, waste management, environmental impact assessment, and institutional R&D structures. So these are the major departments which are there, and the people who are willing to do their final year thesis or their dissertation, they are also welcome to NEERI by applying through our website itself. So first I'll be speaking about the sustainability, understanding sustainability and its importance. So what do you mean by sustainability? So in layman's words, it's nothing but we have to reduce the overuse today so that we are leaving something for our future generation. Meaning whatever we are using, it should be sustainable enough so that the same materials can be used for future generations also. We don't over exploit using whatever we are using today. And historic context of sustainability is in the pre-industrial era and during the industrial revolution, the finite sources of Mother Earth, they were extracted on a very rapid way, and because of this, it was now observed that for the future generation, those resources which were earlier available would not be there. So in 1987, they just had a brief concept introducing sustainable development, wherein they have coined the use or reduction in the use of our resources in such a way that the future generations are not hampered. And in 2015, they have interconnected the global challenges of sustainability. So the interconnected system is
whenever we are talking about any sustainable development, there are three pillars which we are sought to talk about. One is the economic sustainability, second is social sustainability, and third is environmental sustainability. So all these three are the pillars of sustainability development. So when we talk about social acceptance, so any technology that is going to develop should have a social acceptance, and unless it is going to be cheap or economic, it will not be applied. So the three pillars, it should be giving a environmental uh, greener solution along with social acceptance, and also the cost should be minimal. Only by having all three things, the sustainable development goal can be achieved. And in terms of long term planning, we should have always in consideration the future generations and the future uncertainties. Example, when we are talking about sustainable energy sources, we are moving from the fossil fuels towards solar energy. So whenever we talk about solar energy, today there is another group which are working on the life cycle assessments. During the life cycle assessments, it has been observed that the solar panels, once they are worn out, so what will be the end of life cycle? So that is also being taken into consideration before going on to the renewable energy systems. Importance of sustainability in today's world is such that the environmental resilience. So this is one which we need to maintain an ecological balances, and also by reducing the pollution. Apart from it, we are also ought to have preserving our biodiversity, which is more important, because whenever we are preserving the biodiversity, the whole cycles which are there in the nature is being preserved. Second is economic growth. So we cannot say no to new factories or industrial growth which is happening around us. The only way to have the economic growth along with environmental resilience will have our inclusivity, which is social equality. In order to reduce the gap between the rich and the poor, we have to have the gap closed by having more developments. So this can be achieved by sustainable developments. So protecting the natural resources, because we have a finite earth with finite resources with us. So three things which we need to focus on as of today in the immediate future is biodiversity conservation strategies, water resource management, and renewable energy transition. We already talked about renewable energy transition for a few seconds. Like, in order to shift from fossil fuel to a long term or solar energy, so we are also talking about hydrogen fuels. So these are some of the renewable energy transition which we are talking about is important to us, so that we give our future generation also what we have tasted today. Biodiversity conservation, this is one of the main criteria which is important to us, because there are so many species which are being threatened as of now, and they have been named under the IUCN. So the third is water, which is the elixir of life. So water, effective water management practices, including rainwater harvesting and wastewater recycling, they are very much crucial for sustainable water availability and quality for our future generation. So my presentation is something related to water resource management. HRTS is a technology which helps in water resource management. So balancing growth and conservation. So this we have talked about many times in our previous slides also, wherein we have to have investment in the innovation, wherein green sectors and jobs could be fostering more, and it could also help the social disparity to come low. And resource management strategies, this is one of the main thing which we talked about in the previous slide, three main resources which we need to effectively manage for our future generation. And policy framework and development, this is something which is there with our government, where they have to put in some more effort in order to provide economic and sustainable uh, technologies to the industries and for our day-to-day activities. So technology innovations are advancement in the renewable energy, smart technology integration, and
circular economy innovations. When we are talking about circular economy, it is nothing but the waste of one process becomes the source, or uh, it becomes the source of the other process. So there will be a cycle or a loop that is totally closed, wherein we are able to achieve maximum amount of benefit from one time recovery of the source. So challenges in the future, current challenge is the climate change impact, which we have been seeing even in our day-to-day life, wherein we are able to see that the climate change has affected in our day-to-day activities, starting from our rainfall patterns to the rainfall stretch. Generally, we used to have 1000 mm of rainfall in Maharashtra, wherein the 1000 mm of rainfall was spread across 3 months of duration. Now we are having a very short time and heavy downpours, which is going to affect both the society and also the environment. Second is inequitable resource access, wherein we should have forests and also the populations which are thriving in these forests. So the pillars of sustainability: economic incentive, community involvement, and integrated policy approach. So these are the pillars of sustainability are economic, social, and environmental sustainability. So these three pillars actually make this sustainability to stand up. Any one of them, when they are not being met, the sustainability will not be actually efficient also. The role of policy and community engagement in sustainability. Here we can see that the policy making or policy decisions are more important to us, and they will only advocate all the industries or our generation to move towards sustainable or sustainability. Now, coming to the main topic: high rate transpiration system. So what was the need for a technology such as high rate transpiration system? So the current wastewater treatment solutions, if we actually see, it is nothing but physical, chemical, and biological treatment, and followed by tertiary treatment. In physical treatments, we have dilution, equalization, separation, screening, etc. Chemical neutralization, and then making the pH to be neutral. Biological treatment is mixing industrial with other waste, sanitary waste, oxidizing. These are some of the treatment techniques which are used. In terms of these three: physical, chemical, and biological, this is necessary for all the effluent to be treated. When it comes to tertiary treatment, we have reverse osmosis and multiple effect evaporator. The main issue being here is, whenever we are going for reverse osmosis and multiple effect evaporator, there are two things which are involved, and this does not have a sustainable way of looking at effluent treatment. One is, if we are going to use this or enforce this technology towards the industries, then it so happens that the industries will not be able to cope up with the capital cost and also the operational cost, which are very high, because reverse osmosis is one of the technology which uses high pressure and require high energy inputs. Multiple effect evaporator is an process where you are giving it thermal energy, wherein that also requires more amount of energy to be spent upon. So when we are talking about RO and MEE, the issue that lies behind is, the India has committed towards 2070, which is a carbon neutral country. So if we want to become a carbon neutral country, meaning we are not emitting more amount of carbon dioxide or the greenhouse gases than what we are able to sequester. So here, if we are going to have or enforce RO and ME more and more on industries, it is such that this particular 2070, the carbon neutral footprint which we want to achieve, is a bit tougher. So eco-friendly technology, the HRTS is a eco-friendly technology which not only treats the effluent even after meeting the pollution control board norms,
but it also has a second advantage. So the green belt development. So whenever we are going to have wastewater reuse in agriculture, it is either directly or indirectly in everywhere in India, and it has hazard risk and benefits. The nutrients which are there can be used, and this helps in order to reduce our import on the uh, fertilizer chemicals which we import from other countries. So health hazard is one which are associated with non-treated or preliminary treated wastewater when it is going to be used in agriculture. Whenever we are talking about partially or untreated wastewater to be used, here we are able to see that this affects the persons who are working in the field also. Apart from that, it also has adverse effect on the groundwater. And we are now uh, working towards wastewater. Sorry, hello. सही नहीं दिख रही यहाँ तो हाँ नहीं ओके when we are actually talking about wastewater and particularly sewage is having 99% of water, and it is having some salt, sugar, and also other components which are there. So the perception of farmers for wastewater reuse in this has been done in various cities across the country, and we have come to a conclusion that this particular sewage, though having all the nutrients, needs to be treated to a limited extent so that this can be used. NERI being working on public health and environmental issues, we have come up with a technology in the early 80s of constructed wetland system. So this is one of the early stages of constructed wetland system, which was first ever uh, given by NERI, or in the country. It was the largest constructed wetland that was set up in the 1990s, and research publications have also been made. And based on this technology, we have improved it so that this technology which was used for sewage can also be used for our industrial effluents. So we have constructed lysimeters, and based on these lysimeter studies, uh, crops were grown in order to see, and based on these crops grown and also the high transpiration potential of these plants, we have now come to a conclusion that this particular technology can be used for our industrial setups also. So what are the benefits and impacts? So when we talk about this, the load on the water supply, that can be reduced because the industries actually take up water for their process, and they do generate effluent. When we are talking about effluent, once it is treated to a level where it can be discharged on lands, these are the norms that are being set up by the Pollution Control Board. So this becomes an alternate source of your water for the green belt development, and green belt is a mandatory for all the industries to be put up. So minimum of 33% of the total land area should be maintained as a green belt by industries. And in order to maintain this green belt, industries were earlier taking more fresh water sources and maintaining the green belt. NERI intervened in this by creating a technology which is high rate transpiration system. Here we are actually making plantation of forestry tree species, and we are also making in such a way that this effluent after its treatment is used as a source of water.
Secondly, because we are eliminating the reverse osmosis and multiple effect evaporator as a tertiary treatment, the greenhouse gas built up because of using of these energy intensive technology that is being reduced. Third is economic sustainability, wherein the actual maintenance of this particular system is very low, and thereby improving the annual savings in the operation cost. And also, it is helping them to have a water reuse systems. As we have already mentioned, green belt. So, to have a definition of green belt, it is nothing but a layer of trees that is being made around the industrial area. Thereby, it will have two or three benefits out of it. One, it will act as a sink for the greenhouse gas emissions that is being generated by these industries. Second, you should be having an ecological balance. Thereby, biodiversity is also being maintained. Third, it also acts as a noise barrier so that any noise from these industries will not be coming out. So, the existing regulations which are there with pollution control boards under section 26 for water, which is Prevention and Control of Pollution Act 1974, and also the legislative framework for achieving zero discharge in industrial wastewater treatment plants for 17 categories, which is the authority to uh, produce frameworks or legislation. They have given some guidelines to how this particular uh, treated effluent can be used for green belt. So through their NGT bench order in 2019, they have given certain criteria wherein they have to have either agriculture scientist or a university which is having um, knowledge about the soil and the wastewater and its impact on the soil and groundwater for a longer term. They have to design these systems which can be utilized by the industries. So that is where NERI comes into picture, wherein we design these systems for our industrial partners. And as already said, the MOEF, which is the Ministry of Environment and Forest, they have now come to a conclusion that they need to have an increase in the greenbelt area, because this greenbelt area is actually helping in curbing the or go into the environment. So they are now proposing that the 33% which was there earlier would be increased to 40%, and the talks are still on, and they would be increasing this greenbelt area for every industry. If there is going to be an increase in the area of greenbelt to be maintained, so obviously there will be an increase in the pressure of freshwater resources. So HRTS would gladly suffice both, one, your greenbelt area to be developed, and secondly also the reuse of your treated effluent. So the major use of our HRTS is wherever there is going to be cost and energy reduction or sustainability is being a goal for any industry. That is where we come into picture. And some of the current available techniques, which are like reverse osmosis and multiple effect evaporator, they are, and also cost which is being incurred into it. So HRTS will be a better option for them so that they can reduce both. These are some of the recognitions that have been given to this particular technology, wherein we have convinced the pollution control boards that this could be an option to reduce both the cost and also the carbon footprint. And we have also made a cost comparison wherein the actual cost for your reverse osmosis would cost around 3 crore, and this would have around 50 to 60 lakh rupees a hectare. The only drawback is you should be having land area for developing green belt, and you can be utilizing the your industry itself. Green option, which is close to zero liquid discharge. So, with
HRTS, which is a land treatment system, it consists of ridges having plantations that are having high transpiration potential plant species, and furrows will be laid with filter bed media. When we are talking about filter bed media, these are natural resources like uh, coconut husk, sawdust, rice husk, which are today's problem because of stubble burning. So these are the materials which are used in our system itself, so that water or the treated effluent, when passing through this filter bed media, are all the more refined and then taken up by these plants and they are evaporated. The growth of the plants are also faster, and secondly, they are also not contaminating the groundwater. So when we are talking about high rate transpiration system, this is a tailor-made system, meaning same system even if it is applied in same type of industry. For example, we have been working with Coca-Cola beverages at 3 different sites, but the technology or the design would be different for 3 different places, because this particular technology relies on 3 different things: soil, the plants, filter bed media, and your effluent which is going to be disposed into the system. So when we are talking about soil at 3 different places, though the soil will be different at different states, so the design would also differ based on those. The concept behind which this HRTS was being developed. First is the wastewater is being used and groundwater recharge. Up to 10 to 20% of the water reaches the groundwater. Secondly, restoration of land by having plantation. Third, the physico-chemical and biological renovation that is being happening because of giving water to the environment. Third, the reuse of nutrients, wherein this wastewater, whatever it is going to contain with them, they will be used, and the rejuvenation of land, because whenever we are going to have plantation, the biogeochemical cycles which are associated with the environment, they get revived and they are being used. So the principle behind it is the root, water use, plant growth, nutrients which are there in the water, and in terms of soil, water movement and microbial and geochemical cycles are being taken into considerations. So these are some of the places where this technology has already been issued, implemented at a field scale. And when we are talking about plants, so the plants are the heart of the system, wherein we are able to have uh, more amount of water to be taken up by these plants, and uh, this plants help in act as a biopump and helps in order to transpire these to outer atmosphere. So thereby the land area requirement elsewise, meaning if you are not using HRTS and a normal green belt, the water acquisition level would be much lower. Generally, in clay soil, only 15,000 liters of water can be disposed in 1 acre of land if we are going to have a normal greenbelt area. And if we are going to develop HRTS as a greenbelt area development, then approximately 50,000 liters can be fed to that 1 acre of area itself. So thereby the load or the load of land area requirement is also reduced over here. Third, what we find here is the soil or microbes. They also help in order to have the wastewater that is being fed here to be treated. And the filter bed media, which we use here as coconut husk, bagasse, sawdust. So these are the materials which are posing threat to the environment, because when they are fed to the soil and wastewater is flown through them, so they help in order to actually acquire the residual pollutants in the effluent, and they help the plants also to grow in a better state. So in order to have this technology at a field scale implementation, so first we go with the laboratory studies, wherein we have small test how much is the soil's capacity to take the water.
Here we also do some of the lysimeter studies wherein we lay the filter bed media within and the plant species that can grow based on the model wastewater which we collect. So based on all these things, the final design is being made. So the basic concept is nothing but we have here the ridges on which the plantation is being made, and here we have the furrows, and we have filter bed media over here. Wastewater is fed onto this furrows, and most of the water is being taken up by the plants itself. Approximately 60% is being transpired, 20% is the evaporation loss, and 20% percolate to the ground. And after going through the filter bed media, the water which is reaching to the groundwater, they are free from the pollutants. And in order to actually prove this, we also have groundwater monitoring systems like piezometers, wherein we do the studies. And some of the demonstration sites are Mahindra Vehicle Manufacturer Limited and KSPG, which is at Pune, and Orient Paper Mill at Amla. So the implementation steps are such that we start with our site selection and sampling, and based on this soil we bring to our laboratory. We do the earlier steps like the lysimeter studies, and then the land preparation will start up. So whenever we are going for land preparation, there will be ridges and furrows which are constructed, and then the filter bed media which is being laid here. And in the filter bed media, uh, you will be having the wastewater to be flowed. So this is how the ridges and furrows are being made. And once the ridges and furrows are being made, then comes the filter bed media layering, and then at last we go with the plantation at the site. And then after plantation, this is how the site looks like. So this is one of the implementation site at Talco Ranipet, wherein the cannery effluent was also being used. And these are the steps like land, and then filter bed media is being, furrows are fed time, uh, urban forest is being generated. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. This webinar is open for discussion. If you have any questions. Thank you so much, sir, for being here Thank with you, us. sir, for being here with us. It was a very informative and wonderful lecture. Thank you so much. Now, continuing with our paper presentation, I would like to invite Dr. Dakeshwar Verma, sir, with his presentation. And for this session, for this technical session, I request Dr. Rajkumar, sir, to be our chairperson, sir, and Dr. Ashwini Kumar Sharma, sir, to be our reporter. Dr. Dakeshwar Verma, sir. Thank you, madam. हाँ फर्स्ट वाला नहीं धनेश्वर नहीं ऊपर था उसके ऊपर आप सभी को जानिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़ और ऑर्गेनाइजिंग टीम को विशेषकर मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार, मेरे तरफ से धन्यवाद। और जूलॉजी के बच्चों को मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम ये तो सफल हुआ है अभी तक और सफल रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण है। क्योंकि इस तरह का पार्टिसिपेशन मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड किए हैं, ऐसे कीनोट स्पीकर भी गया हूँ, स्पीकर भी गया हूँ, हम लोगों ने भी ऑर्गेनाइज किया। तो मैं इस तरह की जो पार्टिसिपेशन देखा हूँ जूलॉजी के बच्चों को मैं कल धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि आपके कारण जूलॉजी का शान है, कॉलेज की शान है, और आप इस तरह से पार्टिसिपेट करिए। हालांकि मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, मैं तो जस्ट एक ओरल प्रेजेंटेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट हूँ। Still, I think it is better to, this is the right time and right platform to encourage your potential the way you are doing.
तो ज्यादा कुछ मैं ज्ञान की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि 3 दिन से सुन के सभी का दिमाग पक चुका है, सभी का सर घूम रहा है। किसी को मिनी माइग्रेन है, किसी को मेजर माइग्रेन है, किसी को हेडेक है, किसी को सर दर्द है। हो सकता है यहाँ का पानी पी के ठंडा ठंडा पानी पी के किसी को सर्दी भी हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजों से ओवरकम करने के लिए भी जस्ट 15 दिन, सॉरी 1 महीना पहले मैं एमएससी के बच्चों के साथ हमने एक प्रोजेक्ट जो है, आप करते होंगे पता होगा, तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने एक क्रीम बनाया, हर्बल क्रीम। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ा काम देने वाला नहीं है, बिल्कुल आपके लेवल का है। और आप इस तरह की चीजों को इनिशिएट करके, इस तरह का प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करके काम करके अपने आप को भी आप फेमस कर सकते हैं, और एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, फॉर्मुलेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ हर्बल क्रीम। वैसे वैसे करते हैं। नेक्स्ट, पहले स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये क्रीम हमने जो बनाया है वो है, और उसका जो लेबल हमारे बच्चों ने तैयार किया है, मुझे पता है मेरे पास 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में पूरा समराइज करूंगा। नेक्स्ट, और इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, हिंदी में ही बोलूंगा। इसको हमने अपने लैब में ही तैयार किया, और इसकी सबसे खास बात कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने पूरे के पूरे नेचुरल एक्सट्रैक्ट को लिया हुआ है, जिसमें से सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है आपका हनी वैक्स, मोम जिसको बोलते हैं, जो हनी के मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। ये तेल है, सेफ्रॉन है, तो सबका अलग अलग है। मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, और हमारे स्टूडेंट है रिया महोबिया, वो वहाँ पे इंटरव्यू में होगी, उसके साथ हमने काम किया था। यहाँ पे आप नीचे वाला अगर आप देखें तो आपको पढ़ने से समझ आएगा कि पेस्ट टेस्ट हमने जो है परफॉर्म किया है। जब हमने इस क्रीम को बनाया, हर्बल क्रीम को बनाया हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, और सर्दी है, सर दर्द है, तो इस तरह के लिए जब हम इसको अप्लाई किए, तो सबसे पहले जो सवाल उठता है कि वो किसी तरह से किसी के लिए इरिटेशन तो नहीं है। पेस्ट टेस्ट परफॉर्म करना बहुत जरूरी था, किसी को वहाँ पे साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी को हम डायरेक्ट हेडेक के लिए सर में अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले हमने कुछ वॉलंटियर्स लेके यहाँ पे पेस्ट टेस्ट उसका जो है परफॉर्म किया, और वो काफी अच्छा रहा, किसी को किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। नेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हैं जो कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मैंने आपके सामने पिक के फॉर्म में रखा हुआ है, और पूरा तो नहीं बता सकता क्योंकि काम का एक्सपोजर मुझे इतना शानदार मिलेगा मैं नहीं सोचा था, और इस काम को हम पेटेंट के लेवल तक ले जाएंगे। और इसको मैं जस्ट डिस्कस किया हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट IIT के एक सर से, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि सतना MP में है, वहाँ के एक बहुत बड़े हमारे प्रोफेसर हैं। मैंने डिस्कशन किया तो वो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए अभी वो इतना भी खर्चा है, चाहे वो लाखों में हो या करोड़ों में हो, वो देने को तैयार है। तो हमारे लिए बड़ा एक अच्छा रास्ता है इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और नेचुरल वेक्स आप सभी को पता है, सिंधे जो है हमने यहाँ पे दालचीनी का भी पाउडर लिया हुआ है इस हर्बल क्रीम को बनाने के लिए। नेक्स्ट, और ये प्रिपरेशन फार्मूला में मैंने पर्टिकुलर अमाउंट को जो है लिमिट कर दिया है, क्योंकि अभी मैं इस फार्मूला को जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता। डिस्क्लोज करने से जो है मेरा ही जो वर्क है वो पब्लिकली हो जाएगा, जो कि फिलहाल मैं नहीं चाहता, क्योंकि जब तक ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ना आए, ये हमारे कॉलेज के नाम से प्रोडक्ट ना बने, तब तक मैं इसको पब्लिकली नहीं करना चाहता। बस ये करना चाहता हूँ कि हमारा जो थीम है कॉन्फ्रेंस का सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो वो हम उस वे में बियॉन्ड द जैसे आपके बारे में, तो आपका भी सेम फंक्शन है। इस क्रीम की खासियत ये है कि आपको झंडू बाम के कंपेयर में आना होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप में से किसी के घर बच्चा हो, तो बच्चे को अगर सर्दी हो तो आप उसके लिए अगर घर में झंडू बाम आप यूटिलाइज करना चाहे तो उसके नाक में फिर आप सर भी लगाएंगे तो उसका बड़ा इरिटेशन होता है, उनको जलन भी होता है। और ये मैंने अपने बच्चे भी टेस्ट करके देखा है, तो उसको किसी तरह का परेशानी नहीं, बोलता मुझे ये वाला झंडू बाम चाहिए। जब इस पर्टिकुलर नामकरण नहीं हुआ है, जब नामकरण होगा तो उसको नाम से हम पुकारें। तो ये आपके जो है 10 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमने शो किया हुआ टेबल के फॉर्म में, और उस इंग्रेडिएंट के सामने आप देख सकते हैं। देखिए सर,
कल मैं आशीष सर का पीपीटी देख रहा था। इन्होंने हनी वेस्ट जो लिखा है आपने, इन्होंने रेट कल बहुत ज्यादा बताया। अपने साथ 50,000 जेली का सॉरी और हनी वेस्ट का 500 से 1000 आपके बाम का नाम हैंडसम बाम होना चाहिए आपके जैसा। Sir, you make my day and forget actually what I'm going to do. तो ये 10 आपके कंटेंट है, इसके अलावा 4-5 और भी कंटेंट है, बिल्कुल हमारे सराउंडिंग लिया गया है। आपको इसमें किसी तरह का कोई सोफिस्टिकेटेड बाहर से यूएसए से या जर्मनी से मंगाया नहीं है, बिल्कुल स्वदेशी छत्तीसगढ़ी प्रोडक्ट है। मैं भारत का तो है हूँ ही, लेकिन छत्तीसगढ़ी प्रोडक्ट है पूरी तरह। नेक्स्ट। और ये हर्बल क्रीम हम लोगों ने इस तरह से बनाया, ये जो अभी इसका जो कवर पेज हमने जो डिजाइन की, इसके लिए जो एक लेबल हमको लगाना है, तो इसको डिजाइन किया था हमारी एक स्टूडेंट है प्रीति देशमुख। तो उसने ही मैं 2 घंटे का टास्क दिया, उस बच्ची ने पूरे आधे घंटे में मुझे डिजाइन करके दे दिया। और उसके हिसाब से उसने इसका नाम रखा हनी इन्फ्यूजन थेरेपी HIT हिट, जो कि हमारा कॉलेज का हो रहेगा उसमें। और ये इस तरह से दिखा है। कल हमारे कटकर सर आए थे, हमारे जो आपको यार ठीक से नहीं पड़ा है तो मैं क्या करूँ। तो मैं बोला सर ऐसा क्रीम हमने बनाए हैं, अप्लाई किया। सर बड़े खुश हुए और इतने खुश हुए कि मुझे भिजवा देना, लेकिन मुझे तुम्हारे पास है उसको दे दो। सर को फिर एक डिब्बा में इनको दिया कि हमारे पास जो था, और एक नीचे तक पब्लिकेशन वाली मैडम आई थी, उनको भी हेडेक था। मयूर सर यहाँ पे नहीं बैठे, उनको भी हेडेक था। और तुरंत इन लोग का मतलब इंस्टेंट एकदम, ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़े। लगाने का टेक्निक है, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो ये प्रिपरेशन ऑफ हब से ये एक पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल हमको क्रिएट हुआ है कि पहले किसको लेना है, कितना टेम्परेचर में आपको वर्क करना है। तो प्लीज आप इसको इमीडिएट ट्रायल बेसिस पे मत करेंगे, हो सकता है धोखा हो जाए, स्क्रीन की जगह कुछ और बन जाए, फिर आप जो जिस पर्पस में यूज करना चाहे वो नहीं होगा। तो नॉलेज इज वेरी डेंजरस, सो डू नॉट अप्लाई इट योरसेल्फ। और एक जस्ट मैं इसको, वैसे तो बहुत सारे स्लाइड दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हम पेटेंट, डिजाइन पेटेंट या फिर यूटिलिटी पेटेंट में जाने से पहले इस पेपर को पब्लिश करना पड़ेगा। और अभी ये पेपर जो है, ये वर्क जो जस्ट इट इज इन द स्टेज ऑफ MSc प्रोजेक्ट। तो MSc प्रोजेक्ट में बच्चों से क्या कर सकते हो ना, हमारे ना FCI कुछ भी। तो इनिशियल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते थे, कौन कौन सा फाइटोकेमिकल है, तो ये हमारे लैब में आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। कम से कम एक एक्सपेरिमेंटल हम कुछ तो दिखा सके कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कौन और सॉल्वेंट यूज किया था तो सब के साथ। तो हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का आपको जो टेस्ट होता है, मॉलिस टेस्ट है, सेलिंग टेस्ट है, 2-3 हमने परफॉर्म किए, जेनेटिक टेस्ट है। तो सभी में पॉजिटिव आया, मेथनॉलिक एथर बेंजीन और पेट्रोलियम इसमें एक्सट्रैक्ट है। ये सेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। ये आपका बेनेडिक्ट है। और ये आप नीचे देख सकते हैं टेबल, हमें कौन सा टेस्ट हमने किया और कौन से सॉल्वेंट में हमने फाइटोकेमिकल उसका एनालिसिस किया और वो आपका किसमें ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिला। तो आपको मेंटेन हर जगह बेस्ट सॉल्वेंट वहाँ पे कवर करा है। और ये ओवरऑल रिजल्ट ऑफ फाइटोकेमिकल टेस्ट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। अब आप सभी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ओवरऑल फाइटोकेमिकल टेस्ट क्या, हमने जो हर्बल क्रीम बनाया सभी कुछ मिला के, तो उसमें कौन कौन सा मेजर मेथनॉल एक ऐसा रो है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस मेथनॉल में आपको कार्बोहाइड्रेट भी प्लस है, इन भी है, फ्लेवोनॉइड्स भी है, टर्पेनॉइड्स भी है, एल्कलॉइड्स भी है, बस ग्लाइकोसाइड और एंथ्रोक्विनोन्स वहाँ पे एब्सेंट है। तो अभी इसमें फर्दर GCMS वगैरह परफॉर्म करने की जरूरत है। टाइम हो गया। और ये पेस्ट टेस्ट, ये तो जस्ट 4 लोगों को हमने भी किया है, हमारे बच्चे हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं। कल मयूर सर ने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कि सर आप एक फॉर्म, एक फीडबैक फॉर्म आप बनाइए, जिसमें आप जिसके ऊपर अप्लाई करें उनका फीडबैक लीजिए और इसको कम से कम आए, और जितना आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे फिर आप इसमें आगे बढ़िए। जब आपको पेटेंट कराना है, इसको रिसर्च को पेपर को पब्लिश करना है, और मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है एज ए अल्टरनेटिव झंडोबाम विक्स। नेक्स्ट। तो इसमें किसी तरह हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। और ये कंक्लूजन,
है। अब इसमें yet to do lot of work in this work, but 1 महीना प्रोडक्ट को बनाया हो गया, अभी तक कोई कंटामिनेशन नहीं है, किसी तरह का कोई फंगल नहीं हुआ है, उसमें कोई फंगल उसमें डेवलप नहीं हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक का उसका स्टेबिलिटी का है। और वो हमारे पास अभी 2-3 डिब्बे बचे, क्योंकि जितना कॉस्ट आया था मैडम ने भी काफी हमको कराया था। मैडम के पास हम जब प्रोडक्ट को लेके गए थे संसद ग्रुप के पास, तो उन्होंने इंस्टेंटली हमने बोला कि क्या कॉस्ट रखे, तो हमने वो 20 रुपया, मैडम ने तुरंत 20 रुपये दिया और वो एक प्रोडक्ट खरीदे थे। बहुत सारे हम लोगों ने बेचे हैं, लेकिन इसकी डिमांड को देते जैसे हम थोड़ा लालची हो गए हैं, तो थोड़ा डिमांड में इसका रेट बढ़ाने वाले 30 रुपये करेंगे। लेकिन इतना है कि में इसका रेट कम रहेगा और इरिटेशन बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, ये सब आपका फाइंडिंग्स है और मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा न्यूज कवरेज को, क्योंकि ये जब तक न्यूज में ना तब तक ऑथेंटिक नहीं लगती। मैं कितना भी चिल्ला के बोल दूं कि हमने ये किया, हमने वो किया, न्यूज पेपर में अगर कोई चीज आ गया मतलब थोड़ा आपका ऑथेंटिक हो जाता है। नेक्स्ट, और ये भी हमारा राभा में भी सेम आया था। दिग्विजय कॉलेज की केमिस्ट्री में के अध्यापक एवं छात्रों ने प्राकृतिक उत्पादों से बनाई हर्बल की मिलेगा पेटेंट, और ठीक इस तरह काम किया है। चाय जो आप चाय पीना पसंद करते हैं, वन टाइम देयर इज नो टाइम एक्चुअली जिसे टू टेक टाइम टू टेक टी, तो 5 बार कभी पीते हैं ब्लैक टी, कॉफी, हर्बल टी, तो उसका एक हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढा विदारी का। आप में से बहुत से नाम सुनोगे, विदारी पताल कुमड़ा भी बोलते हैं, तो वो कैफीन का एक बेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स है। हमारी एक बच्ची है एमएससी 4th सेमेस्टर की संस्कृति देशमुख, तो उसके साथ हमने काम किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 100 ग्राम कॉफी में हमको पूरा 2 ग्राम कैफीन मिला। अब वो प्रोडक्ट उसको प्रोसेस के दौरान वो प्रोड्यूस होता है कि एडिशनली मिलाया जाता है, ये बड़ा सवाल है। इसमें हमारा रिसर्च चल रहा है और इस तरह की चीजें भी पेपर में हमारे आई थी और इसको हम हाईलाइट भी करेंगे, आगे चल के एक्सपोज भी करेंगे चीजों को। तो अल्टीमेटली मेरा भी वही काम है, सस्टेनेबिलिटी, और जंगलों में जाके इस तरह के काम तो करता ही हूँ मैं वैद्यों के बीच में। तो बस इतना ही। नेक्स्ट, आप सभी का थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बियॉन्ड द लिमिट टाइम मुझे प्रोवाइड किया, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप में से कोई अगर कोई सवाल पूछे तो ये प्रेजेंटेशन पे सच पूरा मैं ऐसा मान के चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट। मेरा क्वेश्चन नॉलेज के लिए है कि आप स्टेबिलिटी स्टडीज कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करके कर रहे हैं? मैंने आपको बताया बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हमने जस्ट एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, और वो मेरा जितना भी केमिस्ट्री का नॉलेज था कि मुझे लगा कि ये भी स्टेबल होगा। अभी हमने कुछ भी इसमें मेथोडोलॉजी तैयार नहीं किया, हम तो बस हीट एंड ट्रायल बेसिस पे जा रहे थे, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैं पहले से अपने घर में 1.5 महीने से 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। तो मुझे लगा इसको प्रोडक्ट के अब जब बच्चों से मिलकर डिस्कशन हुआ तो डेफिनेटली हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमको लगता है कि हम उनसे ज्यादा जानकार हैं, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि दे आर गुड एलिजिबल इनफ एक्चुअली। तो उनसे डिस्कस करके लगा कि हमको ये भी स्टेटमेंट लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए। तो अभी इसमें बहुत सारी स्टडी बची है, तो अभी आपका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए सॉरी। इसमें ठीक है, मैंने भी इसको देखा है। आपके प्रिंसिपल रूम में मैं भी था, मेरा नाम नहीं था, मैं भी था उस समय, उसको मैंने करने देखा। लेकिन इसमें आपको एक अभी तो इनिशियल स्टेज है, बहुत लंबा काम बाकी है। आपको इसको नेशनल ड्रग जो काउंसिल होती है मेडिकल की, मेरे ख्याल से जब उससे वो पास होगा तभी इसको आप जो है वो मार्केट में या कमर्शियल में ला सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप बिल्कुल वो एजेंसी पता कीजिए कौन सी एजेंसी है जो इस तरह की जो चीजें होती हैं आगे बढ़ती हैं। फूड एंड ड्रग भूल गया था, तो वो बीच में आपका एक वो है बहुत बड़ा हर्डल है, उससे पास करा। बहुत अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि क्या उसको एक बायोकेमिस्ट बना सकता है इस प्रकार के मेडिकल को, ये सब गाइडलाइन थोड़ी पता करनी है। मालूम चला आपने पूरी मेहनत की जान लगा दी, और एंड में जाके कोई ऐसा पॉइंट आया कि जो निराशा ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है, इससे आप पूरा फुल प्रूफ हो लीजिए तब इसके में करिए, मतलब एंटर कर सकते हैं। सर आपने जो बात कही ना सर, बहुत बहुत अच्छा है, धन्यवाद। आपने बहुत शानदार सजेशन दिया। इस ये मेरा ध्यान में था सर, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको एक इंस्टीट्यूट का नाम लिया, AKS सतना मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे सर ये इन विवो स्टडी करते हैं और उनके पास बहुत शानदार सेटअप है इन विवो स्टडी के लिए। उनके पास 700 माइस हैं, खरगोश है 100+, 3 बंदर है। सर से मैंने बात किया और सिमिलरली मैंने
IIT BHU वाराणसी के जूलॉजी के प्रोफेसर से भी मेरा अच्छा टर्म्स है, तो मैंने पूरा क्लिनिकल ट्रायल के लिए पूरा बात किया है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको पूरा अप्रूवल देंगे और वहाँ पे फार्मासिस्ट भी हमारे साथ रहेंगे जिनके साथ हम कोलैबोरेटिवली वर्क कर सकते हैं। ये हमारे अकेले का काम नहीं है सर, क्योंकि हमारे यहाँ एथिक्स नहीं है सब चीजों को लेके। हम एथिक्स विदाउट एथिक्स परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये मेरा एक नेक्स्ट लेवल का अप्रोच ये था कि मैंने IIT BHU से भी इसके साथ बात की इसके लिए, और हमारे पास AKS भी हमारे पास है जहाँ पे हम जाके फ्रीली इसको ट्रायल कर सकते हैं ऑन माइस ऑन रैबिट। थैंक यू सर। Thank you, Mr. Rakeshwar, for your nice presentation. That is formulation of and evaluation of herbal cream. जैसे कि डॉक्टर फिस्के ने भी बताया कि you have to go through various tests like MT जैसे मैंने बताया. Then इसके बाद आपको you have to go for hormone ACMAC test also. So there are and you said that you don't have any you have to go. Question that. Except that your formulation is a cream. So, is it really cream or ointment? Because when we are talking about cream, so we generally we used to say that 50% water and 50% is oil. When is there, then it is a cream. Yes. And when it is 80% oil and 20% water, then we used to say. And secondly, when we use cream, so we have to use that in various like ice creams, puddings, and some other. And we use terminology like ointment. So we have to use terminology like ointment for the application of the that particular thing to apply on skin for burns or for headache or for certain other thing. So you have to clear that things first, that whether it is a cream or whether it is an ointment. Okay. From your discussion, I think I come to this outcome that I think it is better to reform and rename it as a not as a environment. Yes, you have to go through that because for there are certain parameters also. So you have to go through that parameters and on the basis of chemical analysis also, how much percentage of oil, how much percentage of water is there on that basis, and their application also, because you are using that whatever your product, not for food items like puddings or for creams or ice creams or certain something like that. You are using that atom for application on the skin. So I suppose better way to say ointment rather than cream. Sir, thank you very much. Actually, you are not asking me a question; you are suggesting me it's a very good suggestion. I think in order to boost our, in order to introduce our product as quality product. So that if fulfill all kinds of parameters and anything further, if any question will arise, we will be prepared for that. Thank you, sir. Sir, thank you. Thank you very much. So there's one more question. Don't forget, I am not a quantitative here. I am just a candidate who is going to present this oral presentation. Thank you so much, sir. This was very nice presentation. ग्लोबली जो भी सारी चीजें हमें मिलती हैं, हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्रीम यूज करें या ये नहीं करें। तो आपकी प्रेजेंटेशन से तो थोड़ा लग रहा है कि इसमें आपके बेस्ट चीजें हम कॉन्फिडेंटली इसको यूज कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन भी है और एक आपके लिए सजेशन भी है। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियसली PhD में रिसर्च में काम किया, जिसमें मैंने CCRS आयुष मिनिस्ट्री से मुझे फंड मिला है। तो मेरा एक सजेशन आपको है सर कि आप आयुष मिनिस्ट्री से, क्योंकि ये हर्बल बेस्ड वर्क है, तो वहाँ एक अच्छी फंडिंग मिलती है। आप स्टूडेंट्स को हायर करेंगे और आपको लैब भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ऑल इंडिया में। उसी तरह की आयुष मिनिस्ट्री अभी CCRS की प्रोजेक्ट देती है, PDF देती है, PhD के फेलोशिप देती है। ये कुछ 2-3 साल के दौरान हुआ है, इससे पहले ये चीज नहीं होती थी। तो एक बहुत अच्छी फंडिंग आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। और रिसर्च के लिए वो और भी सजेस्ट करते हैं, काफी अच्छा उनका मेंटर रहता है, एक पैनल रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और दूसरी बात सर कि जैसे आप कह रहे थे कि इन विवो आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो बिफोर यू गो फॉर द इन विवो टेस्ट यू शुड, आई थिंक ये मेरा सजेशन रहेगा कि बड़े लेवल पर एक छोटे उस पे कर सकते हैं हम इन विवो सेल्फ से हम टेस्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको एक सिनेरियो कर सकते हैं। सो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो चेक फॉर इन विट्रो सेल्स, कैंसर सेल्स जो भी हमारा अवेलेबल होगा, जैसे करते हैं सेल्स पे, किडनी सेल्स पे।
तो हमारे इंडिया में बहुत अच्छे लैब्स हैं सर, उस पर आप कर सकते हैं। और इनिशियल जैसे पैच टेस्ट कर रहे हैं सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप क्या सोचते हैं कि ये जो हमारा आपने जो याद किया है उसमें क्लाउड हीलिंग में ये कितना हेल्प कर सकता है? थैंक यू वेरी मच मैडम। ये बच्चे आप भी सुना करें, हालांकि मैडम ने मुझे भी सजेशन दिया, लेकिन आप जब पीजी कंप्लीट करने के बाद आपके पास कोई आइडियाज है ना, तो आप जैसे बच्चों के दिमाग में क्या रहा था कि कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा जरूरत नहीं 8वीं पास बच्चा भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ सकता है। ठीक है, आप क्वालिफिकेशन के पीछे मत दौड़ा करें। थैंक यू मैडम। तो आपने बोला कि वाउंड हीलिंग का, तो वाउंड हीलिंग का मैडम एक अलग ही मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने जैसे बोला था। तो डीएसटी से भी मुझे लगभग 48 लाख का एक प्रोजेक्ट मिल ही रहा है, और उसमें वाउंड हीलिंग के ऊपर भी हमारा काम है, एंटी सोराइसिस पे भी काम है, और एंटी कैंसर पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स है ना छत्तीसगढ़ में जिसकी मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं लैब में बैठ के करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना। तो मैं जंगलों में जाता हूँ तो मुझे वहाँ के जो ट्रेडिशनल जो ट्राइब्स लोग हैं वहाँ से सब पता चलता है। तो इसको हमने अभी तक ऐसा सोचा नहीं मैडम ट्राई इसमें वाउंड हीलिंग को लेके, क्योंकि हमारे अलग ही प्रोजेक्ट है। तो आई विल थिंक योर क्वेश्चन डेफिनेटली फोर्स मी टू थिंक इन डिफरेंट मैनर, बिकॉज अभी आप सभी से डिस्कशन करके एक तो समझ आया कि बहुत कुछ करना बाकी है। ये जो जस्ट रीड एंड ट्रायल बेसिस पे हमने स्टार्ट वर्क किया है, और डेफिनेटली मैं आयुष मंत्रालय में इसका प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजूंगा। डेफिनेटली आई विल कम टू यू मैडम फॉर योर हेल्प। थैंक यू। Thank you so much, sir. I guess there are no any questions. Okay, thank you so much, sir. Thank you very much. For the next presentation, I invite Ritu Deshlehre. She is a research scholar of Department of Biotechnology, Government, Digvijay Autonomous PG College. The topic of presentation is tools and techniques for the assessment of microbial pigments. Ritu ma'am. Thank you, ma'am. My name is Ritu Deshlehre, research scholar of biotechnology. I will interrupt for a second. I'd like to tell all of the presentees the time limit. Please present your lecture for the duration of 5 minutes, and then 10 minutes. 8 minutes will be for the presentation, and 2 minutes will be for questions and discussions. So please keep the time frame in your mind when you're presenting. Thank you. Today my topic is tools technology for the assessment of microbial pigments. ये डिक्लेरेशन है, ये मेरा कंटेंट है जिसको हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन है, कलर्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। कलर एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे एवरीडे लाइफ को मतलब में हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारे घर को कलर करना है, या फिर हमारा ड्रेस है, या फिर आजकल फूड में भी बहुत सारे कलर्स यूज किए जाते हैं। तो ये जो कलर्स होते हैं, ये जो मिक्स होते हैं, उसको हम लोग सिंथेटिकली भी ले सकते हैं, और फिर वो हम लोग को नेचुरली भी मिलता है, जैसे प्लांट से। और कुछ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखे तो बैक्टीरिया, फंगी है, उससे हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे द डाई एंड पिगमेंट मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच USD 33.2 to 49.1 बिलियन बाय 2027। जैसे इसको अगर मार्केट वैल्यू में देखें तो डाई और जो पिगमेंट का जो वैल्यू है वो अगले मतलब 2027 तक ये जो है वो 33.2 to 49.1 आगे बढ़ सकते हैं, एक्सपेक्टेड किया गया है। इसका यूज हम लोग डाई करने के लिए किसी भी लेदर है, फर है, नेचुरल फाइबर जैसे वूल, कॉटन, सिल्क है, और या फिर इसको कॉस्मेटिक को कलर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका हिस्ट्री है, तो 1856 में स्टार्ट किया, इसका डिस्कवरी हुआ था, जिसमें अर्किन ने सिंथेटिक पिगमेंट को डिस्कवर था। 1954 में फर्स्ट कैल्सिनाइट पिगमेंट फ्रॉम किप्रोमोस वर मार्केटेड। उसके बाद में बहुत सारे इसमें स्टडी हुआ और आगे भी चल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है, द बिजनेस स्टडी एम टू डिस्क्राइब वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेड फॉर असेसमेंट ऑफ माइक्रो पिगमेंट।
कि हम लोग के जो पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं, उसको चेक करना ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको हम लोग इसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट है कि नहीं, इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे हम लोग कुछ पेंट यूज करते हैं अपने घर के वॉल में, तो कुछ लोग को ईटिंग होने लगता है या फिर कुछ लोग को छींक आने लग जाता है, तो इसलिए उसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी। इसके लिए जो हम लोग रिव्यू सर्वे किए थे, उसके लिए हम लोग बहुत सारे सर्च इंजन यूज किए थे, जैसे वेब ऑफ साइंस, स्कोपर, गूगल स्कॉलर है, जनरल हो पेजेस, और इसको सर्च करने के लिए हम लोग बहुत सारे कीवर्ड्स भी यूज किए थे, जैसे पिगमेंट, फंगल पिगमेंट, नॉर्मल कलर, नेचुरल कलर एंड बायोपेंट एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एनालिटिकल टूल्स फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रोबियल पिगमेंट, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, माइक्रोस्कोपिक, एफटीआईआर, एक्सआरडी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एचपीएलसी देखेंगे। फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक कॉमनली एनालिटिकल टूल्स होता है जिसका यूज करके हम लोग पिगमेंट्स का उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और जो ग्राफ है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है ऑफ गोनेटोफ्रेगमिया ट्राइओनियम, एक फंगी है जिसमें हम लोग रिसर्चर ने 3 जो न्यूट्रिएंट मीडिया है यूज किया है। फर्स्ट है पोटैटो डेक्सट्रोज ब्रॉथ मीडिया, सेकंड है नेचुरल पोटैटो डेक्सट्रोज ब्रॉथ एंड थर्ड है नेचुरल पोटैटो मैरो ब्रॉथ, जिसमें जो सबसे ज्यादा हाई पिगमेंट प्रोडक्शन हुआ है वो नेचुरल पोटैटो डेक्सट्रोज ब्रॉथ में हुआ है। नेक्स्ट है एफटीआईआर। एफटीआईआर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी भी पिगमेंट का या फिर कंपोनेंट है उसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एफटीआईआर यूज करते हैं। ये इसका भी शोइंग एफटीआईआर इंस्पेक्शन मिलेनियम प्रोड्यूस। नेक्स्ट है एनएमआर, द टेक्निक दैट मेक्स यूज ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ गैस फॉर मैग्नेटिक NMR used to evaluate the pigment graph and pigment from ICT. Next है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसका यूज हम लोग किसी भी कंपोनेंट या फिर सैंपल का मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए करते हैं। एक ए वाला जो गैस है वो कर्बोनेट सोडा अलग अलग मैग्निफिकेशन कर सीख लिया गया वो है, और सेकंड है crystal like structure from the extracted pigment of cytolithia pugodia. नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का यूज हम लोग कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जो फर्स्ट वाला ग्राफ जो शो हो रहा है वो एचपीएलसी का विथआउट फर्दर प्यूरिफिकेशन है, और सेकंड वाला जो है एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफ वो आफ्टर प्यूरिफिकेशन है। नेक्स्ट है एक्सआरडी। एक्सआरडी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होता है जिसका यूज हम लोग किसी भी कंपोनेंट के क्रिस्टलाइन कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज करते हैं। ये ग्राफ है एक्सआरडी मिलेनियम प्रोड्यूस्ड बाय कर्बुलेरिया सोइल। Next है conclusion. The proper assessment of microbial pigment is essential for their various applications. Advanced techniques such as spectroscopy. Ma'am, sorry to interrupt. Please call. Okay, I got you. Advanced techniques such as the spectrophotometry, chromatography, XRD, SEM, and NMR is widely used to evaluate pigment purity, stability, chemical composition, and property. These tools help ensure the suitability of microbial pigments for large-scale production and commercial use. Here is some references. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Now this presentation is open for queries if you have any queries. There are no questions. Thank you so much. Yes, there are no questions. Thank you so much, ma'am. For the next presentation, I hereby invite Nitesh Kumar Datta. He is a research scholar of Department of Biotechnology, Government Digital Autonomous PG College. He will be presenting on the title Biomaterial-Based Nanofiber Scaffolds for Tissue Engineering Application. Nitesh Kumar Datta. Good morning, distinguished guests. Good morning, distinguished guests in the one and one to be present here. I am Nitesh Kumar Verma, research scholar in biotech. Nitesh, I am like to interrupt you. Our resource persons, they are having some
medical emergency आई है. So I would like to request Dr. Sanjay Kiski and Dr. Jha, Dr. Prashant sir to be on stage. Neatly. Sayana. I request Dr. Sanjay Kiske, Dr. Majid Ali sir to present Dr. Prashant Kavle sir with a memento as a token of our respect and love for him. So I request Dr. Trilok Dev sir. So please, Dr. Priyanka Singh ma'am. Ma'am. Dr. Priyanka. Next, for honoring our resource person, Dr. Ashish Jha sir, I request to all our delegates, especially Priyanka ma'am, please present sir with a memento as a token of our respect. Priyanka ma'am, Kiski sir, Majid sir, our resource person, Rajkumar sir. Okay, on behalf of Karthik sir, I request Jha sir and Kavle sir to please receive that memento as a token of our respect for all of you, sir. Thank you so much for giving your precious time and being here with us. Thank you so much. Thank you, sir. Now, Nitesh, you can continue with your presentation. Thank you. Thank you. So my research focus on biomaterial based nanofiber scaffolder tissue engineering application. So let's start with introduction. Next slide. Ma'am. Discuss it already, sir. Introduction. What is nanofiber? Nanofiber means one-dimensional nanomaterial, commonly referred to as a nanofiber, have emerged as a versatile component with a variety of application across scientific research and various industries. This remarkable structure have a diameter with range from 1 to 100 nanometer. Normally हमारा अगर हेयर की बात करें तो 80,000 to 1 नैनोमीटर के रेंज में हमारा हेयर स्ट्रक्चर रहता है. द क्वालिटी ऑफ नैनोफाइबर डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ सेम स्ट्रक्चर टेक्सचर ऑफ फाइबर. इसमें इसका पोरोसिटी डिपेंड करता है, इसका हायर सरफेस टू एरिया वॉल्यूम रेशियो भी डिपेंड करता है. नैनोफाइबर आर promoting innovation in tissue engineering due to their ability to mimic natural tissue structure. They serve as effective scaffold for cell growth, differentiation, and can be distinctly designed to gradually degrade, promoting tissue growth and regeneration. केराटिन प्रोटीन इसमें हमने यूज किया क्योंकि ये अबंडेंटली यूज होता है और इसमें
ये टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका सेल एडिशन प्रॉपर्टीज में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन स्टैंड out as a remarkable biodegradable and biomaterial polymer ideal for development of nanofiber scaffold disulfide bond are found in keratin protein, which provided more complexity, strength and tightness. Keratin based biomaterial are derived from keratin, a type of protein found in skin, hair and nails. Keratin based biomaterials such as hydrogel, nanoparticles, scaffold and film exhibited mechanical strength that reveals that of collagen, confirming their suitability for tissue engineering and application. This is a keratin protein structure alpha helical and a beta pleated seed of keratin protein. The structure of polypeptide background keratin protein. So aim and objectives of our research. The aim of this research to design, develop and evaluate a biomaterial based scaffold for tissue engineering application, especially for the regeneration of tissue engineering organ, example skin and bone cartilage. Objective: design and fabricated a biomaterial based scaffold with porosity and mechanical properties. Material characterization: characterize the physical, chemical and biological properties of the scaffold material. Cell scaffold interaction: investigate the interaction between cell and the scaffold, including cell adhesion properties. This is the method for extraction keratin. तो इसमें नॉर्मली क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले सेलून से हम लोग हेयर सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको नॉर्मल डिस्टिल वाटर से सबसे पहले वॉश आउट करते हैं, उसके बाद 0.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड सल्फेट से उसको वॉश आउट करते हैं, उसके बाद हेक्सेन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, जिससे उससे लिपिड मॉलिक्यूल या फिर ग्रीस ऑयल पार्टिकल्स है वो सब अलग हो जाते हैं। उसके बाद उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको स्मॉल पीसेस में लाइक 4 to 5 नैनोमीटर में कट करते हैं। उसके बाद एक सॉल्यूशन मिक्सचर तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग 2.6 मोलर थायोरिया, 5 मोलर थायोरिया एंड 5% टू बीटा मर्केटो इथेनॉल का मिक्सचर सॉल्यूशन में डीप करके 24 आवर के लिए 65 डिग्री सेल्सियस पर स्टीरर करते हैं। उसके बाद हमको एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं 8000 आरपीएम पे। उसके बाद उसको डायलाइज करते हैं अगेंस्ट डिस्टिल वाटर सेल्यूलोज ट्यूब में 2 दिन के लिए, देन लायोफिलाइजेशन। उसके बाद हमको कंप्लीट एक प्योर केराटिन सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। इसी केराटिन सॉल्यूशन को हम लोग सेल्यूलोज एसिटेट और डिफरेंट टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं या फिर केमिकल होते हैं उसमें ट्रीट करके हम लोग नैनो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्पिनिंग टूल्स है जो कि हमारे कॉलेज दिग्विजय कॉलेज के डिपार्टमेंट बॉटनी में प्रेजेंट है। और नैनो फाइबर टेक्निक के लिए डिफरेंट टाइप के टेक्निक होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्पिनिंग और ड्राविंग, टेम्पलेट सिंथेसिस, सेल्फ असेंबली। तो हम लोगों ने नैनो फाइबर बनाने के लिए इलेक्ट्रोस्पिनिंग टेक्निक का यूज किया। इलेक्ट्रोस्पिनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्पिनिंग uses an electrical charge to draw very fine microfiber nanofiber from a polymer in a liquid solution or melt. Electrospinning is a widely used method for creating a nanofiber due to its simplicity, low production cost, easy of adaptation and efficiency. अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो सीरीज नीडल, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई कलेक्टर। तो ये होता है सीरीज पंप होता है जिसमें हम लोग ये सीरीज इसमें पॉलीमर फिल करते हैं। पॉलीमर इसमें हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होता है और हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के कारण जो पॉलीमर होते हैं वो कलेक्टर में रोटेटिंग होता है, इसमें चार्ज जनरेट होता है। जैसे चार्ज जनरेट होता है रोटेटर पंप से ये पुश होते जाता है और यहाँ से पॉलीमर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये कलेक्टर ड्रम में, रोटेटिंग ड्रम में ये कलेक्ट हो जाता है और इस टाइप से हमको फाइबर अल्टीमेटली प्राप्त हो जाता है। ये इसकी स्टेप्स है जो मैंने बताया। और जो कंपोजिशन यूज किया वो फ्लो रेट होता है 0.5 ml, वोल्टेज 15 किलो वोल्ट पे, डिस्टेंस नीडल का 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 4.7 mm, साइज ऑफ नीडल 20 mm, गेज आरपीएम 1000 to 1200 गेज। रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो हमने जो नैनो फाइबर केराटिन और सेलुलोज एसिटेट बेस्ड नैनो फाइबर बनाया उसका वाटर सोल्युबिलिटी 9.10% प्लस माइनस 1.2, फेलिंग प्रॉपर्टीज 100% एंड रिमेनिंग आफ्टर 6 days 40% इसका रिजल्ट आता है। ये सेम ये सबसे फर्स्ट वाला डायग्राम फाइब्रिकेटेड सेलुलोज एसिटेट और केराटिन का नैनो फाइबर मेट है और ये सेम एनालिसिस है। हमने नैनो फाइबर जो बनाया है वो 0.5 mm से 50 mm का नैनो फाइबर यहाँ बनाया है। इन विट्रो साइटोटॉक्सिसिटी एंड
बायोकम्पेटिबिलिटी स्टडी हमने जो नैनो फाइबर बनाए ये कंट्रोल है और ये अलाइन और एक रैंडम नैनो फाइबर अलाइन का हमने इन विट्रो साइटोटॉक्सिसिटी हमने चेक किया तो हमारा जो नैनो फाइबर है वो 100% सेल वायबिलिटी एम्ब्रायनिक स्टेम सेल में 100% वायबिलिटी देता है जो कि सही है. Conclusion: we have successfully done fabricated cellulose acetate and based keratin based nanofiber. This study demonstrated the potential of keratin based nanofiber as a promising biomaterial for tissue engineering application. The electrospinning keratin nanofiber exhibited excellent biocompatibility, biodegradability, and mechanical properties, making them an ideal scaffold for tissue regeneration. We have been made the nanofiber of 5 to 50 mm range that is tested on the cell viability in embryonic stem cell and the nanofibers of biocompatibility and non-cytotoxicity with the respective cell reference. Thank you. Thank you, Nitesh. This presentation is open for discussions. If you have any questions. Okay, thank you. Nitesh, thank you. For the next presentation, I invite Dr. Namrata Kahar. She is guest lecturer here at the Department of Biotechnology, Government Dikuje Autonomous PG College. Her topic of presentation is exploring the unknown potential of Pseudomonas venenosum on the proliferation of cancer cells. Am I audible? Good afternoon, everyone. This is Namrata Kahar. So, मेरा presentation का topic है exploring the unknown potential of Pseudomonas venenosum, which is one of the important plant in Ayurveda, on the proliferation of cancer cells. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉपिक जो है हर्बल को करने के लिए आगे और भी इस पे रिसर्च करने के लिए ये प्लान किया गया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मेरा आउटलाइन है प्रेजेंटेशन का. और अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें कि आपको सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ हमारे एक ग्रीनेस एरिया पूरे लस एरिया पे आते हैं, जो कि ना सिर्फ हर्ब्स प्लांट्स, ये आयुर्वेदिक के हिसाब से भी एथेनो मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है. जैसे कि हमारे ट्राइबल्स, फॉल किलर्स, आपके रीजनल जैसे कि बैगा गुनिया हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत मिलते हैं. तो वो क्या करते हैं, आपके हर्ब्स जैसे कि हल्दी को और बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको नॉर्मली दूध में मिला के, उनको पता ही नहीं होता उनके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज के बारे में. ठीक है, तो ये वाले प्लांट हमको यहाँ मिला था. ये प्लांट एक्चुअली में हमें मिला था अमरकंटक में, और इसको हमने एक फॉल किलर के द्वारा पता किया था. और उन्होंने बताया था कि इसको हमने लगभग 15 सालों से ट्यूमर को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं, और उसको दूध में मिला के काऊ यूरिन से उसको डिटॉक्स करके वो देते हैं. और उन्होंने पाया इतने लगभग 1000 लोगों को दिए थे उन्होंने, तो 100 से 200 लोगों को उसका फर्क पड़ा था. तो हमने सोचा, मेरे सुपरवाइजर ने इसको मुझे उन्होंने सुपरवाइज किया है, डॉक्टर रोहित से, एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में. तो उन्होंने ये स्टडी के बारे में बताया कि हम इसको कर सकते हैं. तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, ये रिपोर्ट पुरानी है एक्चुअली, ये 3rd नंबर पे था. अभी करंट में हमारा 1st नंबर पे हमारा फॉरेस्ट एरिया बहुत अच्छा बढ़ चुका है. तो अगर मैं आगे देखूं तो हमारा Pseudomonas venenosum, एक्चुअली इसका कॉमन नेम है उदू लिली, और इसको बॉटनिकल नाम से जानते हैं Pseudomonas. आपको नाम से समझ में आ रहा है, वेनोसम मतलब ये कहीं ना कहीं स्नैक से है. तो एक्चुअली इसके बारे में बताया जाता है कि आसपास में जो है स्नैक घूमते हैं, और इसकी जो ट्यूबर है, हमने ट्यूबर को यूज किया था. आप देख सकते हैं ये हमारे वहाँ गार्डन पे खुद ही लगाया गया था, मेरे हाथ से ही लगाया गया था, और इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं. तो करंटली हमने ये जो स्टडी है इसकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एक्टिविटी को, प्रॉपर्टी को देखा है, और उसकी क्रूड एक्सट्रैक्ट पे ट्यूबर को यूज करके. तो ये आप देख सकते हैं इंडिया के अलग अलग रीजन पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है. तो बात अभी यहाँ पर हमने इस प्लांट को चूज क्यों किया, तो एक शास्त्र है राजनिखंडू, आपको पता होगा. तो इस राजनिखंडू में इसको बोला जाता है तेलिया कंद, और उसमें एक लाइन लिखी हुई है, तेलिया कंद देहा सिद्धा विद्या
इसका मतलब ये है कि अगर कोई तेलियाकन को यूज करे तो one can get the perfection in the health by the using of तेलियाकन and its potential can be explored by curing the several disease like cancer. आपको पता होगा कैंसर कितनी बड़ी डेंजरस डिसीज है। तो इस तरीके से और भी कुछ रिसर्चेस हैं, तो उसमें पाया गया है कि ट्यूबर में लैक्टिन जो है एक अच्छा एंटी प्लोरिफेटी एक्टिविटी उसमें मिलती है। और ये कुछ एविडेंस है पिछले स्टडीज के। तो हमारा करंट जो एम है वो क्या था कि टू आइडेंटिफाई द एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट पोटेंशियल ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, प्लांट ट्यूबर के एक्सट्रैक्ट को हमने लिया था और उसकी प्रोलिफरेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमने देखा है। और इसके पीछे की मैकेनिज्म है टू आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म की वो कैंसर सेल को कैसे किल करता है, कैसे दैट मैकेनिज्म है वो भी हमने आइडेंटिफाई किया इसमें। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ओवरऑल पूरा मेथोडोलॉजी, मेरे पूरे पीएचडी रिसर्च में मैंने ये सारे काम किया। जैसे कि हमने ट्यूबर लिया, ट्यूबर का पाउडर बनाया, उसके बीच में और भी सारे प्रोसेस है, काउ यूरिन से डिटॉक्सिफाई किया और उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट बनाया, एक्सट्रैक्ट बना के बायोकेमिकल टेस्ट और केमिकल कैरेक्टराइजेशन इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन से यूज किया। कुछ हमारे इन हाउस लैबोरेटरी में जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल थे वो हमने किए और कुछ हमारे रिसोर्स से लेके हमने सारी चीजें किए हुए थे। और आप देख सकते हैं उसके बाद इनिशियली ये प्रिलिमिनरी स्टेज के बाद हमने इन विट्रो एनालिसिस किया हुआ था लैब, सेल कल्चर लैब, एनिमल सेल कल्चर लैब में। तो कुछ जो है हमने अपने लैब में किए थे और कुछ हैदराबाद में सीडीएफडी में प्रोसीड किए थे। तो एक्सपेरिमेंटल मॉडल की बात करें तो कुछ कैंसर सेल लाइंस जो हमने लिए, तो ऐसे तो हमने 10 से 20 कैंसर सेल पैनल्स को लिए थे। तो उसमें से हमने 4 को सेलेक्ट किए थे जो कि कुछ रिजल्ट दे रहे थे साइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट। तो ये हमने रिजल्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है और सारे हमारे इंक्यूबेटर में 10% एफपीएस फीटल बोआइन सीरम और CO2 इंक्यूबेटर में इसको हमने रखा हुआ था। और आगे देखते हैं रिजल्ट के बारे में। तो सेल डेथ, कैंसर सेल डेथ पे इसका क्या क्या रिजल्ट रहा। तो फाइटोकेमिकल प्रिलिमिनरी एनालिसिस से हमने पाया कि जितने भी एक्सट्रैक्ट थे हमने इथेनॉलिक, हाइड्रोअल्कोहलिक और वाटर तीनों लिए थे, जिसमें से हमने पाया कि इथेनॉलिक जो है इंफ्लेमेटरी और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में ये अच्छा रहा। उसके बाद आप देखते हैं कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन में, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में जीसी आपका यूवी और एफटीआर में भी हमने इसका केमिकल कंपाउंड्स भी पता किए। और आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है, टेबल है, ये गैस क्रोमेटोग्राफी का जितने भी आपका कंपाउंड होता है मोर देन 1000 से भी ज्यादा थे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर हमको ये दिखते हैं, आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेचर सर्वे। और ये जो है मेरा पेपर एनालिटिकल स्प्रिंजर पे पब्लिश हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं आगे रिजल्ट, इसको हमने और आगे स्टडी किया साइटोटॉक्सिसिटी। तो LDH एनालिसिस होता है जो कि एक मार्कर है नेक्रोसिस का, और इसकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी हमने आइडेंटिफाई की है। तो हमने देखा कि इसके इस क्रूड से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ता है जो हो सकता है कि सेल डेथ पे हो। उसके बाद आगे हमने देखा था कि हो सकता है आप लोग सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि केस्पेस और पाथ जो वेरी इंपॉर्टेंट एपोप्टोटिक मार्कर, तो इसलिए हमने इसका एक्सप्रेशन भी चेक किया था। एज यू कैन सी इन द स्लाइड राइट साइड, आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन इन कंपैरिजन टू अनट्रीटेड, अनट्रीटेड मतलब जहां हम ड्रग को चेक नहीं कर रहे सेल में, कैंसर से लिए, बट इधर हमने चेक किया तो आप देख सकते हो अप रेगुलेट हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एपोप्टोसिस इसमें हो रही है ऑन द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रूड। और हमने इसकी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी की है। आप देख सकते हैं कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल इमेजेस। आप जाइस की बहुत अच्छी आजकल माइक्रोस्कोप आने लगी फ्लोरोसेंस की, तो सिर्फ इस फ्लोरोसेंस से भी आप बहुत अच्छा इमेज ले सकते हैं। तो ऊपर वो जो है फेस कॉन्ट्रास्ट है, आप देख सकते हैं अनट्रीटेड में वो सेल्स की कैसी हालत है, जबकि आप इंक्रीजिंग ट्रीटमेंट में देखते हैं तो सेल्स क्या एपोप्टोटिक बॉडी रिलीज करते हैं। और यहाँ देखते हैं कि अनट्रीटेड में आपको ग्रीन इंटैक्ट सेल दिखते हैं, जबकि ट्रीटेड सेल्स में आपको जो फ्लोरोसेंस है ग्रीन टू रेड ऑरेंज ऑफ दिस जो विच इज शोइंग एपोप्टोसिस इज गोइंग ऑन। उसके बाद आप देखते हैं कि डापी इज वेरी गुड फ्लोरोसेंट डाई, जो हम इसमें क्या करते हैं कि ये डीएनए में क्या करता है, आपका बाइंड करता है, जिससे आपको पता चलता है कि एपोप्टोटिक सेल्स आपको फ्लोरोसेंट दिखाई देते हैं। आपको उधर दिख रहेंगे अनट्रीटेड सेल्स में सेल्स जो ब्लू है, और इधर आप देख सकते हैं कि कंडेंसेशन हो रहा है, न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी विच इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ एपोप्टोसिस, विच अगेन कंफर्म कि ये जो क्रूड है क्रूड एक्सट्रैक्ट है वो क्या कर रहा है, एपोप्टोसिस इंड्यूस करा रहा है।
उसके बाद इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इथेनॉलिक क्रूड एक्सट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं एपोप्टोसिस जनरेट करता है। तो दिस इज माय स्टडी। और उसके बाद इसकी फ्रैक्शनेशन भी हमने की और फ्रैक्शनेशन में अलग अलग सॉल्वेंट्स दिए। उसके बाद उसकी फिर से हमने वही प्रोसीजर अपनाई और प्रोसीजर में हमने देखा कि अलग अलग डिफरेंट एंटीबॉडीज भी यूज किए थे। अगेन वी चेक और हमने डापी एंटीबॉडीज चेक किए अगेंस्ट केस्पेस 8 एंटी एंटी केस्पेस 8 एक्सप्रेशन चेक किए और यू कैन सी कि यहाँ भी रेड ऑरेंजेस हमें एक्सप्रेशन मिलते हैं इन नीचे वाली जो फिगर है राइट फिगर मर्ज पे। उसके बाद हमने फिर देखा कि इसकी जो स्टडी प्रोपीडियम आयोडाइड के साथ भी स्टडी किया और इसके सेल साइकिल एनालिसिस भी यूज किया जिससे हमको दिखता है कि सेल पॉपुलेशन नंबर भी वो इंक्रीज होता है और इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो क्रूड है सेल पॉपुलेशन को अरेस्ट करता है G1 फेज और G2 फेज में। सो दिस इज माय कंक्लूजन। इससे हमें पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इंफ्लामेटरी और एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। तो आगे भी इसकी रिसर्च जारी है। करंटली अभी ये पब्लिश अंडर द कम्युनिकेशन है और ये अगर हम समराइज करें तो स्कीमेटिक डायग्राम में हम ये ओवरऑल स्टडी को समराइज कर सकते हैं। So this is my authentication certificate for the plant और ये जो प्रोजेक्ट है CCRS आयुष मिनिस्ट्री द्वारा फंडेड है और इसकी फीचर कोलैबोरेशन में ये है कि अभी हमारी जो काम है UMS कॉलेज ऑफ फार्मेसी अंडर द अमित तिवारी के साथ में हमारी ये चल रही है और इसकी आगे की जो एप्लीकेशन पार्ट है हम इसके प्यूरिफाइड ड्रग को देख रहे हैं। And I acknowledge to my supervisor and all committee members and funding agency or this platform. Thank you. There are any queries you can ask her. Okay, thank you. Thank you, ma'am. For the next presentation, I invite Priya Jaiswal. Her topic of presentation will be role of zooplankton community is an important element in aquatic ecosystem and as indicator of aquatic health. A very good afternoon, all of you. I am Priya Jaiswal, and here I am presenting role of zooplankton communities is an important element in aquatic ecosystems and as indicator of aquatic health. Introduction. As an essential component of the aquatic food chain is the zooplankton colony. By transmitting energy from the planktonic algae, which are primary producers, to larger invertebrate predators and fish that subsequently consume them, these organisms act as an intermediary species in the food chain. Through their participation in the cell purification process of the aquatic environment, zooplankton assist in the cycling of nutrients. They promote biodiversity and preserve ecological balance through their interaction with the phytoplankton and other community members. Because of their importance in the food web and sensitivity to environmental changes, zooplankton are essential ecological indicators of aquatic ecosystem health. They are important for monitoring and management initiative because of the way their community composition and diversity reflect the water quality and general health of the aquatic ecosystem. Study area is just beside our college, रानी सागर। यहाँ पे भी मेरा काम चल रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। Zooplankton as indicators of environmental health. Zooplankton communities are highly responsive to change in water quality and making the effective indicators of ecosystem health. Their diversity, abundance, and community composition can reflect the overall condition of an ecosystem environment. Community composition and water. Zooplankton is indicator of community composition and water quality as well as trophic status and ecological integrity. Hierarchical clustering of zooplankton species have a stable association that reflect community function and resilience in highly variable coastal conditions. Sensitivity to climate change. Climate change is one of the most significant threats to aquatic ecosystem, and zooplankton are particularly sensitive to its effect. Changes in temperature and
Pond acidification and altered circulation patterns can disrupt zooplankton communities, making them valuable indicators of climate-driven ecosystem shift. Warming and stratification. Rising temperature and increased stratification of the water column can reduce nutrition availability and surface waters, leading to declines in the zooplankton abundance and shifts in community composition. Pond acidification and adaptation. Zooplanktons are also affected by pond acidification, which can impair their calcification process and reduce their fitness. Impact of climate change on zooplankton. Climate change is altering the distribution of zooplankton species, with many shifting their ranges forwards or to differ was in the response to warming. These shifts can disrupt community interaction and ecosystem function. Zooplankton is sentinels of human impact. Human activities such as pollution, eutrophication, and habitat modification have profound impacts on aquatic ecosystems, and zooplanktons are often among the first organisms to respond to changes. Pollution and eutrophication. Zooplanktons are sensitive to environment in water chemistry, including nutrient enrichment and pollution. Habitat modification, habitat heterogeneity, and changes in hydrological regimes and significantly impact zooplankton diversity. In floodplain ecosystem, for instance, changes in water depth in inundation patterns have been shown to affect the local and regional diversity of zooplankton groups. Challenges and future action. While zooplanktons are valuable bioindicators, there are challenges in using them to monitor ecosystem health. This includes the need for the long-term data sets and the complexity of zooplankton community dynamics, multi-topic approaches, adaptation, environmental response, evolutionary response. Conclusion. Monitoring zooplankton diversity is important for ecosystem management and conservation because these organisms serve as indicators of environmental health and climate change impacts. The diversity reflects the overall health of marine and freshwater ecosystem, affecting food webs and nutrient cycle. Zooplanktons are sensitive to changes in environmental conditions, making them effective indicators of ecosystem health. Their community structure can reveal local stresses and the effect of the climate change, and also management strategy aimed to reducing nutrient loading, improving wastewater treatment practices, and mitigating the impacts of climate change could help stabilizing zooplankton populations and restore ecological balance in the pond. Additionally, maintaining biodiversity within the pond for safeguarding critical habitats such as the littoral zones can support the long-term climate change of zooplankton and other aquatic systems. References. Thank you. Thank you, ma'am. Is there any particular zooplankton you encountered during your study? पर्टिकुलर एक जो प्लैंटन पे नहीं है अभी वाटर सैंपल्स लाके जैसे जितने भी जो प्लैंटन मिलते हैं और बेसिकली अभी जैसे हमने रानी सागर पे किया है तो वहाँ पे पैरामीशियम का जो है जो प्लैंटन उसका प्रोमिनेंसी ज्यादा है पैरामीशियम यस और कोई अलग zooplankton जो आपको पोल्यूशन इंडिकेटर स्पीशीज ऐसा कुछ पता चला है या आपने आइडेंटिफाई किया है? यहाँ रानी सागर जैसे रोडीफर्स वगैरह रोडीफर्स के अलग अलग है और क्रस्टेशियंस के हैं वो सब भी हमको अभी मिले हैं क्रस्टेशियन और रोडीफर्स ये तो एक्चुअली कॉमन zooplankton सी है कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पीशीज आपको मिली है? Thank you, sir. Thank you, ma'am. For the next presentation, I invite Ritesh Kumar. The topic of his presentation will be physico-chemical impact on fish diversity. Ritesh Kumar, sir. Hello. Good afternoon, everyone.
I'm Aditya Kumar, research scholar of Department of Zoology. And today my topic is physiochemical impact on fish diversity. My supervisor is Dr. Sanjay Thiske sir. My today topic is a physiochemical impact of a physiochemical impact on fish diversity. Introduction. मेरा जो मुख्य जो काम है पीएचडी का, मैंने अभी रिसेंट में अभी इनरोल हुआ हूँ, तो आने वाले वर्षों पे 2-3 सालों पे मैंने मेरे को जो काम करना है उस विषय पे मैंने ओवरव्यू तैयार किया है। मेरा जो मुख्य काम है वो फिश डाइवर्सिटी पर है। इंडिया जो है, हमारा भारत जो है, फिश को लेकर के सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे फिश पाई जाती है, और बहुत सारे यहाँ पे वेरिएशंस हमको डाइवर्सिटीज में, लेकिन डिफरेंट जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके कारण से, और डिफरेंट जो फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स है उसके कारण से फिश की डाइवर्सिटी जो है वो कंसिस्टेंटली क्या मेरा जो वर्क है मेन रूप से फिजियोकेमिकल जो पैरामीटर्स है, डिफरेंट टाइप के जो फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर जो फिश की डाइवर्सिटी, फिजियोकेमिकल पैरामीटर ऑफ सेलेक्टेड वाटर बॉडी जो है, मेरा जो साइट है कोदली रिजर्वायर बालोद डिस्ट्रिक्ट में मैंने लिया हुआ है। तो वहाँ पर जो वाटर बॉडी है, वहाँ पर उसका जो वाटर सैंपल है उसका फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस मेरे को करना है। और दूसरा है कि वहाँ पर एनुअल रेट ओनली जो है वहाँ पर केज कल्चर होता है, तो केज कल्चर के थ्रू में कोई पता वहाँ पर करना है कि वहाँ फिश की प्रोडक्शन एनुअल रेट क्या है। और जो नेक्स्ट जो मेरा टास्क रहेगा वो फिश डाइवर्सिटी को लेकर अगर हम बात करें तो फिश डाइवर्सिटी में भी ऐसी फिशेस है जो आज के डेट में एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, जैसे लोकल फिश मोंगरी मछली जिसको बोलते हैं क्लेरियस बैट्रिकल, जिसका जूलॉजिकल नेम है, वो अभी एक्सटिंक्शन के कगार पे है, तो उसके कंजर्वेशन पर भी हम काम करेंगे। नेक्स्ट जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्लैंक्टन्स, डिफरेंट टाइप के जो प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, उन पर भी मैं एक काम करूंगा और उनका भी कंपैरेटिव स्टडी करूंगा। मेथडोलॉजी, मेथड्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो मेथड्स के लिए मुझे पर मंथ सैंपलिंग करनी है। एक बॉटल होती है, उसमें डीप वाटर और सरफेस वाटर दोनों वाटर का मेरे को सैंपल लेना है, और उसमें डिफरेंट टाइप के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को उसको डिटरमाइन करना है, और उस बेसिस पर वो कैसे अफेक्ट करते हैं, फिश फौना को कैसे अफेक्ट करते हैं, उस बेसिस पर मैं काम करूँ। ये मेथड रहेगा। ये रिव्यू लिटरेचर है, मैंने 2 पेपर पब्लिश कराए हैं रिव्यू के, 15 साल के पेपर मैंने रिव्यू किए हैं। उस बेसिस पर मेरे को ज्ञात हुआ है कि जो फिजिकल और केमिकल जो पैरामीटर्स है वो मुख्य रूप से फिश की डाइवर्सिटी को इनहांस करते हैं या डिक्रीज करते हैं। कि फिजिकल पैरामीटर्स को अगर हम लेकर बात करें तो मुख्य जो पैरामीटर है उसमें टेम्परेचर है। आज के डेट में ऐसा कि टेम्परेचर जो है वो कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है वो मेन अफेक्ट करता है फिश की डाइवर्सिटी पर। नेक्स्ट है डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेकर अगर हम बात करें तो वाटर में जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व रहती है उसी को अपटेक करते हैं, फिश रेस्पिरेशन के लिए अपटेक करते हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका प्रोपोर्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फिश प्रोडक्शन के। नेक्स्ट है पीएच लेवल। डिफरेंट पीएच लेवल भी वो फिश की डाइवर्सिटी और फिश के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि पीएच लेवल डिस्टर्ब होने पर जो रिप्रोडक्शन जो है फिश का रिप्रोडक्शन वो एक समय तक इनहिबिट हो सकता है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन जो है डिफरेंट जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, जैसे ओवर फिशिंग हो गई है ना, और इंडस्ट्रियल वाटर हो गया, जो इंडस्ट्रियल सीवेज जो है उसके कारण उसमें डिफरेंट मेटल्स होते हैं, है ना, वो सब क्या करते हैं इसकी डाइवर्सिटी और उसके प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इकोलॉजिकल इंडिकेटर, फिश डाइवर्सिटी में जो फिश जो है एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह भी कार्य करते हैं। फिश जो है एक स्पेशलिस्ट स्पीशीज है, इसके लिए एक स्पेशल क्लाइमेट और ये ज्यादा एडवर्स जो क्लाइमेट होता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है ना। इसी प्रकार जो मराइन जो फिशेस है वो एक पॉल्यूशन है, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके तहत जो है फिश का प्रोडक्शन मेनली अफेक्ट होता है। जैसे कल हमारे एक सर आए थे, सतीश गोटा सर, उन्होंने
काम किया है मड़ौदा टैंक पे, जो पीएसपी का जो वाटर है, जो सीवरेज वाटर है, और पीएसपी का जो कारखाना का जो वाटर है, उसको वही डंप कर दिया जाता है मड़ौदा टैंक पे। तो उनका काम जो है वो वहां पर है। मैंने जब उनसे बात किया तो उन्होंने जब मेरे को डेटा दिखाया तो उनका जो काम, वो फिश की जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंटली, उसमें आयरन की मात्रा जो है उस डैम में बहुत अधिक है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस कारण से जो फिश का जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंटली कुछ सालों में डिक्रीज हुआ। कंक्लूजन, मेरा जो मेन फोकस जो है फिश डाइवर्सिटी पर ये है कि मुझे वो जो कंजर्वेशन, जो फिश जो है, जैसे मोंगरी मछली जो हमने जो बोला क्लेरियस बैट्रिकस, उसका कंजर्वेशन करना है, और डिफरेंट टाइप के जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके उस फिश प्रोडक्शन के बेसिस पर उसको कोरिलेशन स्थापित करना है। थैंक यू। Thank you, sir. This presentation is open for discussions. If you have any question. No? Thank you. For the next presentation, I invite Kumari Kalindi. She is from Kalinga University, and the topic of her presentation is potential use of fungal agents as biological control mechanism for managing various herbs. Good afternoon, Madam present here. This is Kumari Kalindi. I'm a research scholar from Kalinga University, Department of Biotechnology. Today I'm here with my research work, and I'm going to discuss a part of it. Topic is potential use of fungal agents as a biological control mechanism for managing Xanthium stomatium in Raipur, Chhattisgarh area. First of all, I would like to discuss here Xanthium stomatium. क्या है? This is a weed जो कि हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड को अफेक्ट करता है और हमारे यूजफुल प्लांट्स की ग्रोथ को डिक्रीज करता है। तो दैट इज वाई हमारा एक प्लान है कि हम इसे बायोलॉजिकली कैसे मैनेज करेंगे। एंड जैंथियम की एक खासियत है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ टेम्परेचर और पीएच एंड फील्ड्स में ग्रो कर सकता है। बट इट इज स्टिल पार्ट ऑफ डिबेट कि इसकी ओरिजिन क्या है। बट ये ऐसा अनुमान है कि ये कैलिफोर्निया से डेवलप हुआ है एंड इट इज spreading very well in all the environments, in all the countries, and nowadays this is a challenge for all the Asian countries also, including India. It is a pervasive weed that poses challenges, including in Raipur, Chhattisgarh. It is a weed that causes significant challenges to agriculture due to its invasive nature and allelopathic effects on other plants. The effective management of this weed is crucial for sustainable agriculture. It grows very luxuriantly and seriously in paddy, jowar, wheat, maize plants, and it decreases the growth of these crops. हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि क्योंकि ये इन्वेसिव ग्रोथ होता है इसका और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है, तो हमने रायपुर एरिया को सिलेक्ट करके इसके बायोलॉजिकल मैनेजमेंट को काम शुरू किया। My objectives are to survey and to do the collection of infected Xanthium stomatium, to isolate fungal pathogens and to evaluate their pathogenic potentiality on Xanthium stomatium, and to check its possibility of use as a bioherbicide. This is a sustainable approach. First of all, we did pathogenicity and selection of the virulent. For that, we did preparation of cell-free culture filtrate, extraction of cell-free cultures, and general bioassay was done. For this, we prepared the inoculum and mycelia of the fungal isolates
from storage files were transferred to the PDA plates, potato dextrose agar plates, and incubated for 3 days at 28 degrees Celsius. 5 millimeter diameter disc of taste fungus grown on PDA plates were transferred to other PDA plates and incubated for 7 days. Pathogenetic test was done by detached slip biopsy. For that purpose, detached slip biopsy technique were employed to test the pathogenicity. Healthy young tree leaves from the pre-flowering stage of the xanthimum plant grown in the field were picked up and surface sterilized in 0.02% sodium hypochlorite solution for 5 minutes, then rinsed thrice in sterile distilled water and placed on moist cotton filter paper made in 9 centimeter diameter plastic petri plates. And we isolated 12 kinds of fungus: Alternaria alternata, Alternaria tenucina, Alternaria triticola, Sulfospora xanthi strumeri, Carvolaria geniculata, Odium xanthi, Perigonia xanthicola, Puccinia xanthi, Boditis cinerea, Fusarium moniliforme, and Fusarium oxysporum, Arthrinium puccinioides. After that, we went through the checking of factors which are affecting in vitro growth of isolated fungus. Now, for that purpose, I used some synthetic media, semi-synthetic, and natural media. And finally, I observed that PDA was the very normal media for was a very normal media for its maximum growth. And we went through we checked temperature also. For that, effect of the different temperature on growth, sporulation and efficiency of the taste pathogen against Xanthum strumerium were determined by growing it in a BOD incubator at different temperatures, 10 degree, like 10 degree, 15 degree, 20 degree, 25 to 40 degree plus minus ones. We checked its hydrogen ion concentrations also. For that, the pathogens were grown in selected basal media at different pH values, which ranges from 3.9 to 9. And we checked the carbon nutritions. For that, we used the glucose of basal media and was replaced singly by the different compounds. Nitrogen nutrition was also checked, and for that purpose, different nitrogen sources were studied by singly replacing the potassium nitrate of the Asthana medium. These are the conclusions. Isolated fungus was able to degrade xanthium, and it is a hope that there is a possibility of their exploitation as a biocontrol agent. These are few references here. Thank you. Thank you, ma'am. This presentation is open for discussion. If you have any questions or suggestions. मैम एक सजेशन है, आपने जो पैथोजेंस के नेम लिखे हैं उनको इटैलिक में लिखना चाहिए. Thank you so much, ma'am, for reminding. Thank you, ma'am. For the next presentation, I invite Daneshwar Vishwakarma. The topic of his presentation is climate change, greenhouse gases, and government initiatives. Daneshwar Vishwakarma. Sorry.
शुभ मध्याह्न, नमस्कार। मेरा नाम दानेश्वर विश्वकर्मा है। मैं वर्तमान में भौतिक शास्त्र में एमएससी में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं आप सभी के समक्ष ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे अपना वक्तव्य रखने के लिए आया हूँ। देखिए, अगर आप सुबह उठते हैं और पाते हैं कि हम जो रोज रोज प्राकृतिक रूप से जो नल, नदी, जल और हरियाली देखते हैं वो नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर ये सभी विलुप्त हो जाए तो हमारे समक्ष एक ऐसा दृश्य सामने आएगा जो इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये दिन अभी ज्यादा दूर नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर हम पृथ्वी के संरक्षक हैं, उसके मालिक नहीं। पृथ्वी का तापमान लाखों वर्षों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह एक प्राकृतिक कारण है, लेकिन आज यह समस्या वृहद रूप में बड़ी हो गई है, क्योंकि प्राकृतिक कारणों से और कुछ मानवीय कारकों से इसका तापमान सामान्य से अधिक बढ़ता जा रहा है। इसमें ग्रीन हाउस गैस और कार्बन का उत्सर्जन बहुत महती रूप से उभर के आया है। ग्रीन हाउसेस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी लगातार वृद्धि से समुद्र का जल में लगातार वृद्धि हो रहा है और पर्वतों का ग्लेशियर पिघल रहा है। इससे क्या हो रहा है? मृदा का भी क्षरण हो रहा है और मानवीय स्तर पर बड़े बड़े रोगों के उन्नत रूप सामने आए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रयास किए गए हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए ग्रीन हाउसेस इमिशन इन इंडिया के। जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हमारे देश में एनर्जी का कंजप्शन भी बढ़ रहा है। आज भी हमारे देश में एनर्जी का मुख्य स्रोत कोयला और प्राकृतिक गैस और तेल ही है। पावर प्लांट आज के डेट में लगभग 38% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ग्रीन हाउसेस गैस लगभग 18% बढ़ गई है, जो ग्लोबल वार्मिंग का 18% और 38% है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले इसका योगदान 250 ppm था और उसके 200 साल बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उस पे 400 ppm पहुंच चुका है। इसका एक मेन रीजन ये भी है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड अदर डेवलपमेंट कंट्रीज। जैसे कंट्री डेवलप होती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाता है और उनके कारण एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ जाता है। और बाय दिस ग्रोथ 2040 तक ये एनर्जी कंजप्शन 71% तक और भी बढ़ने की आशंका है। इसका एक मेजर रीजन ये है पॉल्यूशन थ्रू व्हीकल्स बहुत आज हमारे देश में लाखों की संख्या में व्हीकल्स दौड़ रहे हैं, जो गुड सप्लाई और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम है। उसके माध्यम से भी ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ रही हैं।
जो व्हीकल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस छोड़ती हैं या फिर मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस छोड़ती है, वो क्या करती हैं, वातावरण में मिल जाती हैं और टेम्परेचर को रोक देती है, जिससे तापमान बढ़ता है। इससे क्या होता है, जो बड़ी शहर है वहां पर उस शहर का तापमान, स्थायी तापमान और इंक्रीज होते जाता है। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से पहले यहाँ पे कुछ डेटा है, उसको मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि इसमें गैसों का कंट्रीब्यूशन और किस एरिया से कितना गैस निकला, उसको यहाँ पे मैंने ग्राफ के माध्यम से शो किया है। ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे शो किया है और इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के, कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा और फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू बहुत सारे मिशंस भी लॉन्च किए गए हैं और टेक्निकल सपोर्ट्स के लिए बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज के थ्रू यहाँ पे स्कीम्स चलाई जा रही है। इसका परिणाम यह है कि उत्सर्जन की तीव्रता में काफी सुधार हुए हैं। 2005 से 2020 के बीच में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन की तीव्रता 36% तक कम हुई है। भारत में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52% तक पहुंच गई है, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। वन और वृक्ष आवरण 2005 से 2021 के बीच भारत के वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस को प्रभाव करने में काफी मदद मिली है। ये मेरे रेफरेंसेस हैं एंड थैंक यू। Thank you. If you have any questions, you can ask him. It is not a question, but would you like to throw some light? Which are the basic greenhouse gases which is responsible for the increment of temperature? Dioxide, methane, and nitrous oxide. You've shown that vehicular exhaustion, and there are some other aspects which is responsible for the increment of temperature in the environment, isn't it? Yes sir. They are responsible sir, जैसे कि ब्लैक कार्बन जिसको हम बोलते हैं या फिर कालिक, वो भी रिस्पॉन्सिबल है सर। Methane is also considered as a greenhouse gas. Yes sir. So is there any mitigation measures we can implement to reduce the greenhouse gases? And one question I would like to ask, actually it is not a question and ये शायद पूछना भी नहीं है, फिर भी मैं आपको पूछता हूँ कि आपने वहाँ पर explain नहीं किया. Why it is saying that it is a greenhouse gases? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना चाहेंगे? इसको हम ग्रीन हाउस गैस ही क्यों कहते हैं? सर ग्रीन हाउस गैस मीथेन को ना सर पर्टिकुलरली नहीं, जो भी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करने के लिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और बाकी के सारे गैसेस, उसको ग्रीन हाउस गैस ही क्यों कहते हैं? सर ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य से आपतित किरणों को रोकती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है सर, जिससे प्लांटेशन को ग्रो करने में हेल्प मिलती है सर। लेकिन करेंट सिनेरियो में इनका उत्पादन इतना ज्यादा हो गया है सर कि ये हमारे लिए समस्या के रूप में खड़े हो गई है सर। ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं, येलो हाउस क्यों नहीं बोलते, रेड हाउस क्यों नहीं बोलते? सर जब हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया था शायद 1880s में, तो वहाँ पे कांच के घर में पौधों को ग्रो करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो सर वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन पाया गया, हेल्प पाया गया, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं सर। The greenhouse actually it is a chamber where we used to control all the environmental conditions like temperature, humidity, hygrosity and all that things, where the gases are trapped and the gases cannot be evacuated from that particular area. So that exactly is the greenhouse, which is the chamber where we used to grow the plants. And our Mother Earth is just like a greenhouse because there is a blanket of different kinds of gases there, and all the energies which is coming from the sun is trapped inside the Prithvi, and so the temperature of the environment is increases day and day now. IPCC is a intergovernmental panel on climate change, is a
very renowned organization. You can go through that and you will see the major changes which is occurred on the earth. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Any more questions, Shiva? Okay, thank you. For the next presentation, I invite Shivam Yadav, student of MSc Physics, Government Digvijay Autonomous PG College. His topic of presentation is Climate Change and SDGs, Challenges and Opportunities. After this, we will be having some online presentations. I would like to call upon their names: Shahina Parveen, Dr. Ashish Kumar Banjari, Prachi Gupta, Gitanjali Mishra, Lakshmi Kant. Please ensure they have joined the meeting. Shivam. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Thank you for being here today. Myself, Shivam Yadav, and I am a student of MSc Second Sem Physics. Today, I will be presenting on climate change and sustainable development goals, challenges, and opportunities. Directed by Dr. Ramkrishna Deshmukh sir, Department of Physics. This presentation will present what is climate change, 17 SDGs, sustainable development goals and climate change, adaptation, planning and implementation, methodology and conclusion. So climate change. Climate change is one of the most pressing global challenges threatening ecosystem, economy and societies. Its widespread effect, rising temperature, extreme weather events, sea level and biodiversity. Loss of significance, risk to biodiversity, human well-being, and sustainable development. However, addressing climate change and present opportunities in investing in renewable energy, that is SDG number 7. Sustainable cities, SDG number 11, and responsible consumption, which is SDG number 12, can drive innovation, economic growth, and resilience. So now we will 17 sustainable development goals, which are no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation, reduce inequalities, sustainable cities and communication, responsible consumption and production, climate action, life below water, climate action, life on land, peace, justice, and strong institutions. And the last one is 17th number, partnership for the goals. Now we will discuss sustainable development goals and climate change. Climate change can reverse most of sustainable development goals. However, climate solution can support all the goals but can hinder goals number 12 out of 17. A specific climate goal or climate change, SDG number 13, and should be integrated into the SDGs because climate change threatens the global achievement of all SDGs. A report by 16 states here are shown. Here are adaptation phase. In this way, we can adapt all this process. Next one is adaptation, planning and implementation. Here are 7 steps of adaptation planning. Climate change adaptation refers to coordinate efforts to protect or improve development activities against the negative impact of climate change, minimize vulnerability and adapt the system to changing climate regimes in a manner that will be sustainable in the future. Adaptation also prevent loss of life and financial loss because climate impacts are harnessed and action plan is made. Such ecological system offer sources such as water, air, land and food. Next one is methodology.
The Prisma flow chart here shown in figure demonstrate how the comprehensive literature search was conducted, providing readers with a clear understanding of how the final data set was compiled for symptomatic analysis. It visually represents the identification, screening, legibility, and inclusion of study, thereby improving the credibility and responsibility of research. Now we will go for conclusion. Here are ways to solution of these all climate changes. There are start a recurring gift, recommend a grant, give a gift of stock, it's taxation and easy by mail online. Mitigation of climate change in the environment is achieved through various measures aimed at sustaining species and ecosystem. Knowledge of genotype by environment interaction is important for the breeding of durable crop variety, but feed the world, especially under a changing climate, human adaptation must be established, especially in the area of food, energy, and water, owing the current changes in the environment that require new and efficient resource management system. The results show the geographical location of the authors in climate change studies, collaboration networks, and focus areas with the use of MCP percent circular chart. This notation is further highlighted. Here are reference internet research paper by G. Syamla, Google Scholar, on government data. Thank you. You sure? His presentation is open for questions. Okay, I guess there are no questions, but there's a suggestion. Improve the way you have written your references. References are not written in that way. Google Scholar is never a reference. Okay, thank you. For the next presentation, this is, I guess, the last offline presentation. It is by Suman Ramteke. Suman Ramteke, the topic of her presentation is abundance and biodiversity of soil nematode. Are there any more offline presentations? Okay. Good afternoon, everyone. I am Suma Ramteke, Research Scholar, Department of Zoology, Government, Digvijay, Autonomous PG College. Today, my topic is abundance and biodiversity of soil nematode. These are contents. Introduction. Nematodes undoubtedly are a group of the most abundant multicellular organisms in the world. They are simple roundworms, colorless, unsegmented leaking appendages, pseudocylimate and vermiforms. They are found in free-living to parasite form infected animals, plants, both, and they are living as a free-living nematodes. Nematodes are particularly abundant in marine, freshwater, and soil habitats. Most kind of the soil nematodes do not parasites plants but are beneficial in decomposition of organic matter. These nematodes are often referred as a free-living nematodes. Classification. Nematodes are roundworms in the phylum Nematoda. Various authorities distinguish the among 16 to 20 different orders within the phylum. Mainly 80,000 species are discovered yet, and in which the 1500 and more are the parasites in the nematodes family.
More than 50,000 species and 200 genera are nematodes has been discovered by the mid 1980s. All the plant parasitic nematodes are relatively well known. Most of the free living nematodes have not been studied very much. These are the classification of nematodes. The two class Chromateria and Anoplia, and these are the order of the subclasses. And soil inhibiting nematodes can also be classified according to their feeding habitats. This classification is a particularly useful for ecologists in understanding the position of nematodes in the soil food webs, like herbivores, bacteriivores, fungivores. A brief review on the work already done in this field. These are some reviews. I have already published a review paper on this topic, and this is some reviews of this paper. In Chhattisgarh, only one paper have published from the last one, Alia Fruits. In this research paper, they have collected 800 samples where the sample tested in the EPNs. They both existing geographical distribution of EPNs have been sustained by the present research in the total 24 district country, Chhattisgarh. They represented the initial comprehension of EPN's evolution of Chhattisgarh state. 5 of the 24 districts, city including Balota Bazar, Mahasamund, Raipur, and Bijapur and Sukma. My topic is the soil nematode, where yet no one had done in this topic. These are some methods for extraction the nematodes. First is Fenwick can, and second corpse decaying and sieving methods. Third is Behrman color, and by the centrifugation we can extract the nematodes also. These are the apparatus. Conclusion. Free living nematodes are very important and beneficial in the decomposition of organic material and the recycle of nutrients in soil. Nematode, bacteriivores, and fungivores do not feed directly on soil organic matter, but on the bacteria and fungi which decompose organic matter. The presence and feeding of these nematodes accelerate the decomposition process. Their feeding recycle minerals and outer nutrients from bacteria, fungi, and other substrates and return them to the soil where they are assimilated to plant roots. Thank you. Okay, thank you, ma'am. If there are any questions, you can ask them. Okay, there are no questions, I guess. Thank you, ma'am. For the next presentation, I invite Chaitanya Sahu. The topic of his presentation is food chain and climate change. Chaitanya Sahu.
आ जा रहा है क्या? सामने रखूंगा प्रिया। मेल सेंड नहीं हो रहा ऐसे ओरली प्रेजेंट उससे हो सकता है पूरा सेटअप नहीं तो उसमें वो लिंक नहीं हो पाएगा मतलब जो ऑडियंस है ऑनलाइन दिखाना एक बार और करें सर I guess there are some technical issues here. Dhaneshwar, are you ready? Dhaneshwar? Or Pradeep, you are ready? Okay. Before we start Chaitanya's presentation, I invite Pradeep for his oral presentation. The topic of his presentation is Navinikarni Urja Consumption. I request Dhameshwar to give his presentation to Rohini ma'am so that there are no technical issues of this kind. सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रदीप कुमार यादव में हिंदी साहित्य से आपके सामने नवीकरणीय ऊर्जा संरक्षण पर शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूं। टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का संरक्षण महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऊर्जा की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग पर ध्यान देना आवश्यक है। ये शोध दीर्घकालिक पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायता प्रदान करती है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को अधिकतम करने के लिए संसाधन प्रबंधन, तकनीकी प्रगति और आर्थिक बाधाओं जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन, अनुसंधान और विकास की वृद्धि और बुनियादी ढांचे में निवेश से नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की दक्षता और पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं पर सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा इन मूल्यवान संसाधनों की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात आती है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, यह संसाधन होता क्या है। बहुत से लोगों में यह भ्रांतियां होती है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है। तो हमारे प्रकृति में दो तरह के संसाधन मौजूद हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। यह दोनों प्राकृतिक संसाधन हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के वे संसाधन हैं जो प्रकृति में पुनः भविष्य में प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से बनते रहते हैं, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्षति होने के बाद भविष्य में पुनः प्राप्त नहीं होता। यह प्रकृति में एक बार बनते हैं, इसका दूसरे बार प्रयोग में लाया जाना संभव नहीं है। हालांकि ये बनते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अत्यधिक समय लगता है।
यह आसानी से नवीकृत नहीं होते। इन संसाधनों का उपयोग करने से हमें ऊर्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, लेकिन इनका उपयोग सीमित है और इन्हें प्राकृतिक रूप से नवीकृत नहीं किया जा सकता। प्रायः सभी संसाधनों का मुख्य स्रोत प्रकृति ही है। अनवीकरण संसाधन के साथ साथ नवीकरणीय संसाधन भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। यही हमारी मूलभूत ऊर्जा के स्रोत है। हमारे पास ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत हैं जो ब्रह्मांड के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास। यह ऊर्जा के कुछ ऐसे संसाधन हैं जो सदैव पृथ्वी में विद्यमान रहेगी, इनकी गतिविधियां विद्यमान में रहेगी। ऊर्जा की किरणें हर सुबह धरती पर पड़ेगी, इसी प्रकार वायु भी सदैव अपनी गिरतीशीलता को बनाए रखेगी। जल भी वर्षा के बाद सदैव समुद्र की ओर गति करेगी, सदैव अपने ढलान की ओर गति करती रहेगी। ऊर्जा के स्रोत। प्रथम, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पृथ्वी में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अन्य सभी जीव इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाणिज्यिक औद्योगिक क्षेत्र में इसकी अहम भूमिका है। भारत में इस ऊर्जा का सफल प्रयोग किया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु में सितंबर 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। साथ ही भारत के किसान इससे नलकूप की सहायता से फसलों को पानी प्रदान करते हैं। दूसरी नंबर पे आता है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल सदैव ढलान की ओर गति करता है। इसी गति का उपयोग करके स्टाफ डैम बनाकर टरबाइन की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत के बहुत से ऐसे जलाशय हैं जहां से पानी को गिराकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। इन जलाशयों में बहुत देशीय परियोजना स्थापित है। तीसरे नंबर पे पवन ऊर्जा आता है। वायु सदा गतिशील रहती है। वायु की इस गति को पवन चक्की के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसी के द्वारा अधिकांश शहरों, नगरों को रोशन किया जाता है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में पवन चक्कियों के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा समूह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। चौथे नंबर पे बायोमास। अधिक मात्रा में प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे धान की भूसी, चीनी मिल से प्राप्त अपशिष्ट, नारियल के छिलके, कृषि अपशिष्ट, इनका उपयोग करके इन्हें सड़ाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। अधिकांश उद्योगों में इन अपशिष्टों का उपयोग कर इन्हीं के विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में ब्राजील में बिजली उत्पादन की क्षमता लगभग 180 गीगावाट है, जबकि भारत में इससे 11.5 गीगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। पांचवें नंबर पे बायोगैस। यह घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि सब्जियों के छिलके, फल, इनको इकट्ठा करके टैंक में भरा जाता है। इनको सड़ाकर प्रदीप, सॉरी टू इंटरप्ट, आप कंक्लूड करेंगे बेटा। इन्हें सड़ाकर गैस उत्पादन किया जाता है। इनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी तरह बायोडीजल, ज्वारी ऊर्जा, इनसे ईंधन प्राप्त किया जाता है। अब इनकी संरक्षण की ओर चलते हैं तो ऊर्जा संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादातर ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। अनावश्यक रूप से पंखा, लाइट या एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें।
खाना पकाने के लिए कम कम जल का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ अभी बढ़ती गर्मी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के आसपास पेड़ लगाया जाए, तो इसमें गर्मी में बहुत गिरावट आएगी। एसी के अलावा जहाँ एसी प्रयोग किया जाएगा वहाँ कूलर से काम चलाया जाएगा। वाहन और ट्रैफिक सिग्नलों के आने पर गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए इत्यादि। आपातकालीन स्थिति के लिए इन ऊर्जाओं का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे जन जन तक पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद। Thank you. For the next, thank you, Beta. For the next presentation, I invite Jhameshwar. The topic of his presentation is Keloside indica as a biosorbent for the removal of heavy metal iron. आप फिर से मेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चैतन्य को इनवाइट करना चाहूंगी। Okay, do we have Prachi Gupta on? Is she ready for her presentation? Prachi Gupta. Yes, ma'am. Hello. Prachi Gupta. Am I Dr. audible, Ashish ma'am? Kumar Banjari, Saina Parveen, Anthony Mishra. Is anyone ready for their presentation? Hello. Am I audible, ma'am? Hello. Ma'am, कौन ready है? Okay. Now we have Prachi Gupta from Government VYT Autonomous PG College Durg. She will be presenting online. The topic of her presentation is study on dye degradation by green synthesis of silver nanoparticle using Catharanthus roseus. Hello. Am I audible to you, ma'am? You are audible. You Very please good start your. morning. Okay. Very good morning to all the professors, and my colleagues and friends. Today I am presenting my small area of research work. I am Prachi Gupta from Government UIT PG Autonomous College, Hemchand Yadav University. My supervisor is Dr. Satish Kumar Sen. My title is a study on dye degradation by green synthesis of silver nanoparticle using Catharanthus roseus Algae Dawn. Introduction. Nowadays, nanotechnology is attributed a new and growing field of research area. The nanoparticles are categorized between 1 to 100 nanometers. All are known this. The combination of two words mean the nanos means dwarf and technol means the deal with the atomic and molecular mechanism. The nanoparticle have many more properties like small size, shape, higher stability, high surface area, and it is also called the magic bullet, which work as drug delivery vehicle. There are nanoparticle synthesis two approaches. First is top-down approaches, which is the breakage of complex, and second is approach, which is the union of tiny substance to reach the nanorealm. This is the synthesis method of nanoparticle. There are mainly three methods: physical
chemical and biological. Here I am using the biological method. In biological method, there are many more microbes, plants, algae, and biomimetic compounds which are used for the preparation of nanoparticle. I am using the plant part. This technique is also called the green technique for preparation of nanoparticle. This is very helpful and have many more properties. It is exclusive, biocompatible, less hazardous, no risk for harmful chemical infection, least cost production, and reduce energy composition and consider as effective technique. The feasibility inexpensive, less are chance in contamination. There are many more applications for green synthesized silver nanoparticle. These are some application of green synthesized nanoparticle. It is used for the antimicrobial agent, drug delivery vehicle, cancer treatment, detecting illness, preparation of fertilizer, disease resistance techniques, biofuel production, sensor preparation, food safety and preservation, skincare products, antimicrobial textiles, and purify wastewater. There are many more nanoparticles are there, in which silver nanoparticle, gold nanoparticle, copper, cobalt, iron nanoparticle. Here I am taking silver nanoparticle. This is the superlative nanoparticle techniques and have huge properties such as chemical stability, high conductivity, catalytic activity, and antimicrobial and antioxidant activity. Here I am using the Catranthus roseus algae dawn, which is from Apocynaceae family. Have plenty of medicinal properties and cure plenty of disease because it have many more phytochemicals named carboxylic acid, ketone, esterol, terpenoid, carotenoid, and many other phytochemicals. Two main phytochemicals are there named vinblastine and vincysteine. They are also known as plant-derived anticancerous agent. Here I am using the two part of plants, flower and the leaf part. For the preparation of nanoparticle, I am using the plant part was dry, grind, and after it, I am using the Soxhlet extraction technique for the preparation of plant extract. These are the plant extract in aqueous solution. The methods are collection of plant sample, washing, drying, and grinding, Soxhlet extraction of sample. When the plant extract was prepared, the extract was mixed with the silver nitrate solution, which is 1 millimolar silver nitrate. After the incubation time with 50 minutes and 60 degrees centigrade, the nanoparticle was prepared. This is the prepared nanoparticle. And here I am using the four techniques for the characterization of prepared nanoparticle used in this spectrophotometer, FTIR, XRD, and SAMP. This is the all overview of my work. Here, this is the plant extract which is used for the total characterization. And after the characterization, I am using methyl orange degradability. And after the degradation, the result was shown with the help of UV visible spectrometer. This is the result of first characterization technique. Here I am showing that first is the plant part have a pale yellow color. Both the plant samples have pale yellow extract, and after the preparation, the color is gradually changed with reddish brown, which indicate the nanoparticle may be synthesized. This is the result of UV graph. In here, the leaf extract have 428 nanometer, and for the leaf extract, it have 452 nanometer. This is another characterization which shows the FTIR of leaf extracted nanoparticle, which shows the absorption speed at 3329.78, which shows the OH stretching, and another peak at 1637, which shows the alkene and aromatic group. For the flower nanoparticle, I found the 3312.08 stretching, which shows the OH stretching, and another peak was 1637, which shows the alkene and aromatic group. This is the another result for characterization XRD techniques. Catranthus roseus leaf extracted nanoparticle have a face-centered cubic structure like the silver nanoparticle. It have four two theta value, which is 32, 34, 38, and 47. The similar result were obtained
by the Jamil et al. 2022. This is for the flower extracted nanoparticle. It is also found cubic centered crystalline nature nanoparticle and showed the standard data at JCPDS file number 0407 and 83. Another characterization technique was Catharinatus roseus nanoparticle with the SAM extract, and the SAM shows the spherical shape of nanoparticle with size 62 to 91 nanometer. For flower extract, it shows the 74 to 98 nanometer spherical shape. This is the methyl orange absorption peak, which is I'm used for the degradation. The absorption peak was methyl orange absorption peak was found at 460 nanometer, which indicate the methyl orange found. I am using the photocatalytic activity for dye degradation. Here the photocatalyst decompose the organic pollutant in the presence of light. Sunlight and catalyst produce free radical. This radical react with pollutant molecule and decompose them. Green synthesized nanoparticle act as the relay system in the solution, and sodium borohydride helps in transferring the electron required for the degradation process. Photocatalytic degradation activity is carried out under the high power, like UV light or sunlight, which shows the degradation efficiency up to 90% of various organic dye. This is the mechanism of dye degradation. Methyl orange degradation occurs due to the electron relay effect. The nanoparticle have limited reduction potential of dye and borohydride. It makes the electron transfer very easy between them. The phytochemical with the nanoparticle surface help in the absorption process by attacking the donor and acceptor by electrostatic attraction. Methyl orange gain the electron and thus get reduced. The mechanism photocatalysis recall the generation of electron hole pairs after the absorbing the light, which subsequently produce the hydroxyl and superoxide anion radicals. This is the result of dye degradation, which I found. We have carried out the photocatalytic degradation of methyl orange using Catharinatus roseus leaf extract mediated nanoparticle as photocatalyst with the help of sodium borohydride reducing agent. The mixture of nanoparticle methyl orange and sodium borohydride have shown the degradation of methyl orange in 14 to 50 minutes. We have recorded UV visible spectrum of the above mentioned photocatalytic mixture for every 10 minutes. The peak at 460 nanometer was vanished after 50 minutes and reaction time. The solution became colorless from reddish orange. This is the result of dye degradation. At last bottle, we seen the colorless, which is the dye degradation. For another, Catharinatus roseus flower extract mediated nanoparticles also mixed with methyl orange and the sodium borohydride, and after 50 minutes, we also show the peak was decreased at 410 nanometer. This is the result of that. The conclusion: nanoparticle mediated photocatalytic degradation is eco-friendly process, relatively inexpensive, rapid, easy method, and did not require any toxic material. Nanoparticles have used as nanocatalyst. Methyl orange dye were degraded within the very short relative time, that is 50 minutes. This is the eco-friendly method for controlled synthesis or shape and size dependent nanoparticle, which can be used in effluent treatment of different type of industries like textile, paper, plastic, paints, and many other chemical industries. These are the reference, and thank you so much. Okay, thank you, ma'am. For the next presentation, I invite Chaitanya Sahu. The topic of this presentation is food chain And questions? climate change. चलो उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक और मेरे गुरुजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है चैतन्य साहू। मैं भौतिक शास्त्र विभाग का सेकंड सेमेस्टर का एक छात्र हूँ। आज मेरा टॉपिक है द फूड चेन एंड क्लाइमेट चेंज। खाद्य श्रृंखला और प्रकृति में जो बदलाव हो रहे हैं उसके ऊपर मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। आज जो खाद्य श्रृंखला है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। खाद्य श्रृंखला मतलब ऐसा श्रृंखला जिसे विधाता ने बहुत सोच समझ के बनाया है। हमारे पर्यावरण में छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से हाथी तक के सभी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है।
यही फूड चेन में हमने देखने मिलता है। फूड चेन क्या है? फूड चेन एक ऐसा चेन है, खाद्य श्रृंखला जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। उसमें एक छोटे सा पौधा है और जितने भी सजीव हैं प्रकृति में, पृथ्वी में जितने भी सजीव हैं, उन्हें सभी को एक चैन में, एक धागा में पिरोने की कोशिश विधाता ने की है। उसी चैन को हम अब आज देखेंगे। इसमें सॉरी फॉर टेक्निकल इश्यूज। मैं अपना व्याख्यान जारी रखता हूँ समय की सीमा को देखते हुए। तो मैं बताना चाहूंगा कि पर्यावरण में सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं इसी से रिकॉर्डिंग एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। मैं जहाँ क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पूरा जंगली क्षेत्र है। मैं अपना गांव में जो रहता हूँ वो पूरा पर्यावरण से घिरा हुआ है। वहाँ अक्सर लोग आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वहाँ जंगलों में अक्सर महुआ बिनने जाते हैं और आग लगा दिया करते हैं। सूखे पत्तों को आग लगा दिया करते हैं। तो वो सूखे पत्तों से पूरा पर्यावरण में, पूरा जंगल में आग लग जाता है ना। तो एक बार का क्या घटना हुआ कि मैंने अपना युवाओं का एक टीम बनाया कि हम इस जंगल को आग से रोके, क्योंकि हम युवा हैं, हमको पता है कि जंगल की आग से पर्यावरण को कितना दिक्कत होता है, कितना परेशानी होता है। बहुत तो आग लग गया। हमने सभी हमारे युवाओं के साथी थे, वो सभी आग बुझाने चले गए। बुझा के आने के बाद शाम को जब हम आए तो हम घर में आके देखते हैं क्या है कि जंगल में फिर से आग लग चुका है, फिर से आग लग चुका है। मैंने फायर ब्रिगेड की टीम को कांटेक्ट किया और नहीं हुआ तो पुलिस विभाग को कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरी बात नहीं सुना, मुझसे ये बात किया कि क्या हुआ, लग गया तो लग गया, तेरे को क्या है, ऐसा सब बात है। तो मैंने हमारे बालोद जिला में एसपी को कांटेक्ट घुमा दिया कि ऐसा ऐसा है, हमारे दल्ली राजरा में माइंस पड़ता है, वहां भी आग जा सकता है। तो एसपी ने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस विभाग को सूचित किया। तो पुलिस विभाग के मेरे गाँव के जो चौक है वहां आते हैं और मेरे को, कौन है लड़का, तू ही किया है क्या? बोले तो यस सर मैं ही क्यों। तो उनके पीछे एक सैनिक भी थे उनके साथ। तो बोला क्या जरूरत तेरे को, क्या जरूरत, तू आग लग गया, तेरे को क्या मतलब है? मैं बोला सर आग लग गया है, इससे हमारे पर्यावरण को इतना छोटा सा जीव, जब छोटा सा पौधा जब आग लग जाएगा तो पूरा फूड चैन जो खाद्य श्रृंखला है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर छोटा सा पौधा अगर नष्ट हो गया तो उसके ऊपर वाले वो खाएंगे क्या? उसके ऊपर ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला खाएंगे। यही कारण है आज साइड में दलित राजा गाँव है, तो आए दिन मिलता है कि भाई के घर में, तो जब उनका छोटा सा फूड चेन जो तो खाने का चीज है वो नष्ट हो जाएगा तो बड़ा कहाँ जाएगा, हम मानवीय क्षेत्र की ओर जाएगा। हमारे क्षेत्र में अक्सर हाथियों का आना जाना लगा रहता है। तो लोग बोलते हैं हाथी क्यों आते हैं हमारे क्षेत्र में, इनको मार दो, इनको कहीं दूसरी जगह ले जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम उनके जंगल में नहीं आए, वो हमारे क्षेत्र, हमारे गांव में नहीं आए, हम ही उनके जंगल को काट के अपना निवास स्थान बनाए हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हम भी पर्यावरण के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्य करते रहें। इसी के साथ मैं अपना वाणी को नाम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Chaitanya. Now we will have an online presentation. Rohini ma'am, please ensure Dr. Ashish Kumar Banjare has joined us. Or Shahina Parveen. We have Gitanjali Mishra, Mr. Lakshmi Kant. Okay, I invite Dr. Ashish Kumar Banjare, Department of Genetics and Plant Breeding, IGKV Raipur. The topic of his presentation is Study of Correlation, Heritability and Genetic Advancement between Seed Yield and its Components in Refrained Linseed. Ashish sir, I would like to tell you, you are given 5 minutes for this presentation. So please keep that in mind. Thank you. Dr. Ashish Kumar Banjare for you. Hello, good afternoon to all of you.
All are visible and audible. Hello. Yes, sir, you are Hello. audible. Please. Yes, sir, you are audible. Start your Okay, okay. जी जी good afternoon to all of you. First off, thank you to present here. Especially thanks to organizing committee to give me an opportunity to present my seminar. In the title, Study of Correlation, Heritability and the Genetic Advance between Seed Yield and its Component in Rainfed Linseed. Next, introduction of the linseed crop. Linseed is one of the most important industrial oilseed crop and a self-pollinated crop grown in Rabi season. Linseed originated from Mediterranean region and belong to the family Linaceae and having the chromosome number 2 and 30. Among all Rabi linseed oilseed crop in India, linseed second position next to the mustard crop. In India, first of the Madhya Pradesh in area and production, followed by UP and Maharashtra. These are the correlation. कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी ऐसा करेक्टर हम जो क्रॉप में लेते हैं वो कौन सा करेक्टर है जो हमारा इल्ड पे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, हम उसका स्टडी करने के लिए कोरिलेशन का स्टडी करते हैं. और जेनेटिक एडवांस ये हमको शो करता है कि जो भी हम उसमें यानी कि जो बेस पॉपुलेशन से हम जो सेलेक्टेड पॉपुलेशन हम जो बनाते हैं तो उस पर कितना जो कैरेक्टर है वो इसमें इन्हांस हुआ है. और हेरिटेबिलिटी क्या होता है? हेरिटेबिलिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये हम हेरिटेबिलिटी और जेनेटिक एडवांस और कोरिलेशन तीनों के इंटरेक्शन से हम बेस्ट जो लाइन है उसको हम सेलेक्ट करते हैं. हम जो लाइन जो सेलेक्ट करते हैं जो लिनसीड का इल्ड के बेस पे वो नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ कैप्सूल्स पर प्लांट एंड वेट ऑफ सीड पर कैप्सूल के बेस्ड पे हम सिलेक्शन किए हैं. हमारा जो इकोनॉमिकल कैरेक्टर होता है, हमारा मेन टारगेट होता है प्लांट ब्रीडर का कोई भी क्रॉप की इम्प्रूवमेंट करने के लिए. उसके बाद फिर हम क्वालिटी, फिर उसका हीट रेजिस्टेंस, बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस पे बात करते हैं. और जितने भी हमारे प्लांट ब्रीडर रहते हैं वो मोस्टली जो नेचुरल वेरिएबिलिटी जो प्रेजेंट रहते हैं उस पर फोकस करते हैं. उसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबिलिटी भी क्रिएट करके हम लोग प्लांट में कैरेक्टर को चेंज करके हम उससे सेलेक्ट करके कोई भी वैरायटी डेवलपमेंट कर सकते हैं. इसका बेनिफिट है लिनसीड का, इसको आइसोलेट फाइबर के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. इसका फार्मास्यूटिकल्स इम्पोर्टेंट है और हेल्थ बेनिफिट है, इंडस्ट्रियल के लिए इम्पोर्टेंट है. फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें अवेलेबल है जो कि हार्ट डिसीज एंड डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बेनिफिट है. हम मटेरियल्स मेथड देखते हैं. हम लोग जो लिनसीड का 14 जीनोटाइप हम लोग रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन पे हम लोग 3 रेप्लिकेशन पे इसको सोन किए थे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग स्वाट इलाहाबाद पे ये रिसर्च स्टेशन में इसको रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें हम जो दिए हुए जितने भी कैरेक्टर है उसका ऑब्जर्वेशन किए हैं. नेक्स्ट, ये जो लिस्ट ऑफ जीनोटाइप यूज्ड इन द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन हम लोग 14 जीनोटाइप लिए हैं जिसमें से फर्स्ट और सेकंड जो है नेशनल चेक और जोनल चेक है. रिजल्ट एंड डिस्कशन जो हमारा जो आप बोल्ड पे देख सकते हैं जो जीनोटाइप के लिस्ट पे LR 150105 पे जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस किया है उसका हम लोग रेट पे मार्क किया गया है. जो जीनोटाइप जो LR 150105 जो बेस्ट एग्जीबिशन किया हुआ है जो कि ब्रांच पर प्लांट एंड कैप्सूल्स पर प्लांट एंड सीड्स पर कैप्सूल एंड सीड्स पर प्लांट में बेस्ट परफॉर्मेंस किया गया है जिसके बेस पे इसको सेलेक्ट किए हैं अमंग द ऑल द जीनोटाइप जो हम ग्रो किए उसके अकॉर्डिंग पे LR 150105 को. नेक्स्ट हमारा कोरिलेशन है, इसको हम आगे हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं. जो कैरेक्टर जो डेज ऑफ मैच्योरिटी, प्लांट हाइट, ब्रांच पर प्लांट, कैप्सूल्स पर प्लांट जो कि सीड यील्ड पर प्लांट पे पॉजिटिव कोरिलेशन है. इस बेस पे हम इस जो जीनोटाइप है उसको बेस्ट सेलेक्ट किए हैं. नेक्स्ट है फिनोटाइपिक कोरिलेशन कोफिशिएंट एनालिसिस पे हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं इसको भी. जो हमारा कैरेक्टर है डेज ऑफ मैच्योरिटी,
ब्रांच पर प्लांट, कैप्सूल पर प्लांट, जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन सीड यील्ड पर प्लांट पे शो कर रहा है। नेक्स्ट है हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी इट इज अ गुड इंडेक्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। High value of heritability and a broad sense indicate that the character is less influenced by environment. Environment से character less influence हो रहा है, इस कारण से हम इसको select करना effective होता है plant breeder के लिए। Next है genetic advance. The a character exhibit high heritability along with high moderate genetic advance estimates suggesting greater role of additive gene effect and selection में भी effective। तो हम जो जेनेटिक एडवांस है और हेरिटेबिलिटी है एंड कोरिलेशन के बेस पे हम सेलेक्ट करने के लिए हमको एक सिलेक्शन का एक वे प्रोवाइड करता है कि हम कौन से क्रॉप में जो कैरेक्टर जो हमारा फील्ड जो प्रमोट कर रहा है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। Please नेक्स्ट conclude है the जो lecture. हमारा जी ओके मैम, Sir, जस्ट please लास्ट। conclude. The time is over. Other Okay. participants are waiting. Please conclude This your is lecture. conclusion. This is the conclusion. Result from the LR150105 was identified as the desirable genotype with highest seed yield, seed per capsule and capsules per plant. High heritability was observed seed yield per plant and a genetic advance for observed in capsules per plant. The correlation shows significant positive association with capsules per plant and the seeds per capsule. Their selection based on this character would be rewarding for yield improvement in linseed. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Next, we have Shahina Parveen. presentation. We have Shahina Parveen. She's a research scholar, Sri Rawatpura Sarkari University. The topic of her presentation is to study the sleep pattern in the adolescent age group in Raipur district. Shahina Parveen. Yes, ma'am. Please wait a moment. I'm sharing the After screen. this Next presentation, presentation, Lakshmikant sir will be ready. बढ़ा दी बोली क्या Excuse me. Excuse me. Am I visible and audible? Excuse me. Yes, ma'am, you are Excuse audible. me. Please start the presentation, but your slides are not visible to us. Slide is not visible. And start the presentation. I think some technical issue is there. Am I visible? My slide is visible. No, ma'am. हाँ नेक्स्ट को कॉल कर दीजिए आप भैया कम कर दीजिए आवाज़ is Lakshmikant sir ready with Is Lakshmikant sir ready with his presentation?
Mr. Lakshmikant? Mr. Lakshmikant? Yeah. Okay, for the next presentation, I invite Mr. Lakshmikant, Department of Zoology, ISBM University. The topic of his presentation is Community Knowledge, Attitudes and Practices, KAP, related to mosquito-borne diseases in the Garyaban region of Chhattisgarh. Mr. Lakshmikant. Sir, you have 5 minutes only for presentation. Please keep that in mind. प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं बोल ही नहीं रहे, बोलेंगे तो आवाज़ बोलेंगे नहीं नहीं वो अटेंड कर रहे होंगे सर। तो क्या बोलना चाहिए ना। Sir, you are not audible. Please start your presentation. Let's start your presentation. You are not audible. That's one new. आगे बढ़ाओ यार दूसरे को तो मौका चलो नेक्स्ट को रोनी मैम चेक कीजिए गीतांजलि रेडी गीतांजलि एक सेकंड में देख गीतांजलि को नहीं है गाइस और कोई शाइना परवीन मैम इनका आवाज़ आ रहा बढ़ाइए तो लक्ष्मीकांत सिन्हा ये तो ये आएगा अच्छा उनका ही कुछ Hello everyone. Now I am audible. Hello. Hello. Yes, sir, you are audible. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. My name is Lakshmikant. And today I am presenting our research on community knowledge, attitude, and practices related to mosquito-borne disease. Our research Sir, you are not audible. Good afternoon, everyone. My name is Lakshmikant.
And today I am presenting our research on community knowledge, attitude, and practices related to mosquito-borne disease in Garyaban district. This study aim to assess how much the local population know about this disease, their perception or risk, and the prevention measure they follow. Our finding will help in developing better public health strategies to reduce the spread of this disease. Let's continue. Introduction part. Mosquito disease such as dengue and chikungunya are major are virus transmitted mosquito complication and human death. Garyaban district, with its dense forest and the seasonal water bodies, provide an ideal breeding environment for mosquito. Our study aims to access the awareness, attitude, and behalf of the community regarding mosquito-borne disease prevention strategies they use. Let's go on study area. Garyaban district is located in Chhattisgarh and characterized by its tropical climate, high humidity, and abundant water bodies. These conditions create an ideal habitat for mosquito breeding. The population in this region primarily depending on agriculture, and many rural areas have limited access to healthcare. Understanding the geography and socio-economic condition of Garyaban is essential to developing targeted strategies for mosquito control and disease prevention. Next one. Socio-economical factors. Several socio-economical factors influence the separate and control of mosquito-borne disease in Garyaban. Priority, limited access and healthcare, and prevents familiar from purchasing mosquito replacing or treat badness. Low level of education also impact awareness, leading to misconception about disease transmission. Addressing these socio-economical challenges is critical to improving public health and preventing future outbreak. About my key finding in knowledge level about MBDS, mosquito-borne disease. Our study found that 72.5% of respondents were aware of malaria, but knowledge about other diseases like dengue 61.8%, chikungunya at 41.2%, and Japanese infantile 38.7% was lower. Many people believe mosquito breed only in clean water, but some species like Calvex mosquito also breed in dirty and steady water. Addressing these misconceptions through education is crucial for effective disease prevention. Next one, attitude toward prevention. Although 78.3 of respondents considers malaria high risk disease, only 62.7% view dengue as a serious threat, while 75% of participants support government mosquito control program. There is some hesitation and is adopting chemical-based prevention method due to safety concern. Building trust through education and transparent communication is necessary for better disease control effort. Next one, practices for vector control. Despite knowing about mosquito-borne disease, people do not aware of fellow prevention measure. 72.5% respondents use bait net, but only 52.7 participant in the eliminating mosquito breeding site. Increasing community engagement through awareness campaigning and incentive can improve vector control practices. My recommendation for public health investigation.
Based on our finding, we recommended a community education program to correct misconceptions, free or subscribed distribution of increasing related net and integrating mosquito control strategies into primary healthcare service. Community-driven effort supported by the government policies will be the key of long-term disease prevention. And my conclusion, this study highlights the gap between knowledge and the preventive action. While many people understand the risk of mosquito-borne disease, behavior change remaining a challenges. Street things, education, community engagement, and healthcare support will be crucial in reducing the burden of this disease. This is my references for this study, and many references I'm not including here. Thank you to all. Thank you for your attention. I would be happy to answer any question you may have. Okay, there are no questions, I guess. No questions, I guess. For the last presentation of the session, For the last Vaiditya presentation Koran. session, this I invite Vaiditya for his presentation. The topic of his presentation is astrophysics. the topic of this presentation is astrophysics and space. That's the Quran. Astrophysics and hazards. Astrophysics starts in space. That is the Quran. डायरेक्ट चला दो ऑनलाइन आप स्टार्ट तो करो बोलना शुरू करो Namaskar, Vande Mataram, and Jai Hind to one and all. This is Vaiditya Koran from Department of Physics. This is Vaiditya. And my topic is hazards and astrophysics. I have very less time. I have very less time. I will do my PPT. हम जब एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं तो हमें एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज में स्पेस एक्सप्लोरेशन कहाँ से सभी का क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो हम देख रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन जब हम कर रहे हैं या फिर अर्थ से लॉन्च कर रहे हैं वहाँ, तो उससे हो ये रहा है कि ओजोन लेयर पे बहुत सारे सैटेलाइट्स आकर वहां पे जो थर्मोस्फीयर है वहां पे इकट्ठे हो जा रहे हैं, जिसके कारण जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण एक कहा जाए क्लाइमेटिक चेंज आ सकता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। सो हम इन टॉपिक्स पे आते हैं अपने स्टार्ट हो रहा है पीपीटी। ओके, जस्ट मैं ओरली कह देता हूँ। कंसेप्ट क्या है स्पेस एक्सप्लोरेशन का? स्पेक्ट्रम हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सभी लोगों के सामने लाया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम की बात होती है, रेडियो वेव्स की बात करते हैं, गामा रेस की बात करते हैं, जो बहुत सारे वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हमको प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी।
लाइट को एनालाइज करते हैं, लाइट को एनालाइज करते हैं, उसके कंपोनेंट जैसे टेम्परेचर, इसमें जो ऑब्जेक्ट मोशन को हम फाइंड कर पाते हैं। अब हम एक्सोप्लैनेट्स की ओर जा रहे हैं, जैसा कि एक्सोप्लैनेट्स की लोग आजकल तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कहना ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ में लिविंग नहीं करेंगे, तो किसी और प्लैनेट्स पे जीवन बचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें हमारे अर्थ को ही इतना अच्छा बनाना चाहिए कि हम अपने सारे रिसोर्सेस को बचा कर रख पाए, जिससे उनका सर्वाइवल भी काफी अच्छा हो। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमने आस पास चारों ओर देखा है कि टेक्नोलॉजी इतना आ चुका है, तो सब स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम एक्सोप्लैनेट्स की ओर अलग अलग रिसोर्सेस को देख रहे हैं। एक्सोप्लैनेट्स में है ताकि वहां से, जैसा अभी हीलियम-3 है, हम कर रहे थे ताकि वहाँ हीलियम-3 को मिल पाए, वहाँ वाटर एग्जिस्ट करता है, ऐसा करके आइस के फॉर्म में रिसर्च हुआ था। तो उससे क्या होगा, अर्थ में जो हम एनर्जी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस पे वो काफी ज्यादा काम कर सकता है। मैं अपना पीटी एंड करना चाहूंगा। हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बस यही बताकर कि फंडिंग, सबसे पहले फंडिंग का सबसे बड़ा हम लोग को डिसएडवांटेज होता है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रही है, लेकिन अभी भी उतना एडवांस नहीं हुआ है कि हम डायरेक्ट किसी एक्सोप्लैनेट में जाकर वहां के रिसोर्सेज को ला पाए। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। टेक्निकल हर्डल्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, एथिकल कंसीडरेशंस है अपने पास, एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। प्राइवेट सेक्टर्स काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं चीजों को, प्राइवेट सेक्टर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे स्पेस एक्स हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गए, वर्जिन गैलेक्टिक, ये सारे के सारे जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। पब्लिक इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के सारे हम टेक्निकल फंडामेंटल्स को देखें, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल यूज़ किया जाए। रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं तो वापस अर्थ पे आना चाहिए थ्रोबैक होके, ताकि वहाँ पे अर्थ की जो ओजोन लेयर है वहाँ पे एक कचरा क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि उसको साफ करने में फिर बहुत ज्यादा बजट लग जाएगा, काफी मुश्किल है। और अभी एक पिक्चर आया था, रोबोट देखे सब लोग शायद 2.0, या फिर वो देखे बख्शीराज वाला, उसमें कितने मोबाइल रेडिएशन के कारण कितने सारे बर्ड्स को हार्म हो रहा था। तो हम सोच सकते हैं कि सैटेलाइट्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाता है उसके कारण ज्यादा हार्म होता होगा, है ना। इसीलिए मैं ये स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला टॉपिक लेकर आया, ताकि हम इन सारे चीजों में भी नए तरीके से सोचकर, एक सस्टेनेबल वे में सोचकर काम कर सके। थैंक यू। Thank you so much, Vedit. This was the last presentation for this session. And now, with all my respect, I call upon stage and our chairperson for today, Dr. Rajkumar sir, to conclude this session. Good afternoon, one and all. I will not take your much of time. So, my dear friend, in this particular session, total 13 offline presentation was there, and 3 online presentation was there. First of all, I would like to congratulate all the presenters who have presented their views and research projects in front of us. सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगा कि जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो 2 चीजें हमेशा होती है, एक तो भाग लो या फिर भाग लो। फर्स्ट भाग लो मीन्स एक पार्टिसिपेशन,
एंड सेकंड भाग लो मिस, वहां से भाग जाओ। तो सबसे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ और सबको कांग्रेचुलेशन भी करता हूँ कि जिन्होंने अपना भाग दिया। एंड लेट मी टेल यू, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऑल द प्रेजेंटेड who was here and give their presentation. एंड यस एट लास्ट जब मुझे चेयरमैन बनाया गया तो कुछ सजेशन भी देना चाहूंगा मैं सभी यंग बर्डिंग साइंटिस्ट और सभी यंग बर्डिंग प्रेजेंटर्स से मैं कहना चाहूंगा कि एक हार्श सजेशन मेरे तरफ से ये रहेगा कि ट्राई टू स्टिक टू द try to speak and try to deliver your deliberation and your views on the theme of the seminar only. Because I have seen so many topics which is not related to the particular theme of the seminar, that is sustainable development and climate change. That's all only my suggestion. Thank you very much. Thank you so much, sir. Before I invite Dr. Ashwani Kumar Sharma, sir, for a vote of thanks, I would like to tell you two things. First, all the presenters who have presented in this session, they will be getting their certificates in the valedictory session. So please wait till the valedictory session. And second, to the students, before going for lunch, please collect your tokens from the registration counter. And all the persons जिनको award मिलने वाले हैं, please contact Majid Ali sir. And now I invite Dr. Ashwani Kumar Sharma sir for the formal vote of thanks for this session. Thank you, Vandana. Thank you, Vandana. In today's technical session, and before the technical session, we have two excellent lectures. First, by our person, Dr. Prashant Thawale sir from RTM. And second was that Dr. He is also from Niri, Nagpur. The two lectures were excellent and they shared their ideas with us. Dr. Karthik actually shared the facilities available at Niri, Nagpur. So I, on the behalf of organizers and government Digvijay PG College, thank for the occasion with their presence and sharing their valuable ideas and also sharing their. I thank the attendees for making the time to joining us for this session. I also thank the research scholars and the presenters who shared their hard work and the new approaches, the field of research. I also thank the technical team for the smoothing of the session and uninterrupted delivery of the online presentations. I also thank the other members of the seminar. They were working behind the screen, but they also played an important role in the conduction of this particular session and also the seminar. Thank you, everyone.